Good evening, students. Welcome to this session. Are you guys able to hear me? Okay, so Ritvik is here. All right. Good evening, Harshal. Good evening. So, guys, we'll just start in 2 minutes. Others are joining the session, so we'll just start in 2 minutes. Okay. Okay, guys. So, where were we last time? Last time, कितना किया था हम लोगों ने? Did we complete all the three indicators for your this CCI? Did we do CCI in the last session? RSI, MFI. CCI was the last topic. We did CCI, right? We completed CCI, right, Amanpreet, Ritvik? Okay, chalo, very good. So, how was the last week? Did you guys traded something? कुछ trade किया? Last session में कुछ trade किया इस week में? Okay, how many did you make? कितना पैसा बनाया आप लोगों ने? Okay, stop loss hit हो गया मैंने का, कोई बात नहीं, HDFC MC में. चलो, बाकी और किसी ने पैसा बनाया? हाँ, leverage और margin बताऊंगा मैं कुणाल आपको, don't worry about that. ओके, किसी ने कल मेरा बजाज एमसी वाला, बजाज एचडीएफसी एमसी वाला कॉल लिया था किसी ने आप लोगों में से? अच्छा कॉल रहा था, अच्छा अपसाइड हमको मिला था उसमें? नहीं लिया? ओके, हर्षल मेड 500 rupees in Bajaj Auto today with a small, trade. Very good, Harshal. That's great. Last time RBL वाला ट्रेड मेरा किसी ने? रिलायंस वाला ट्रेड? Vedika, how much did you make in Reliance?
1725. I mean, that was the buy, and what was the sell? I mean, how much? How much profit did you make? Okay, so you're holding that stock right now. Okay, okay, sure, sure. All right, guys. So let's continue with our today's topic, that is cycle indicator. हम लोग cycle indicator start करेंगे. And this one indicator is a very important indicator when we talk about swing trading. Okay, जब हम लोग swing trading की बात करते हैं, this is one of the most important indicator out there for swing trading, and I'll tell you why this is very important. Okay, so जीपीओ इज अ साइकिल इंडिकेटर जो हमको बताता है कि हमारे स्टॉक में किस तरह का साइकिल चल रहा है, क्या चल रहा है, ऑल दोस थिंग्स इट टेल्स अस. सो इसको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, व्हाट डज द साइकिल ओवर हियर मींस. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. Okay, so guys, as you all know, I told you about an upside movement. Okay, मैंने आप लोग को एक चीज बताई थी. Let me just open the whiteboard. Okay, good evening Sonam, good evening. चलो guys, so when I talk about cycle, what does this mean is, देखो हर एक चीज का साइकिल होता है. ओके, हर एक चीज का साइकिल होता है. जब वो एक लो लेवल से हाई लेवल पे जाता है, फिर लो लेवल पे आता है, फिर हाई लेवल पे जाता है, फिर लो लेवल पे, फिर हाई लेवल पे, इसको हम लोग कहते हैं साइकिल. ऑलराइट, एवरीबॉडी नोज दिस कि कोई भी स्टॉक है, कोई भी बिजनेस है, तो वो सर्टेन साइकिल से गुजरता है. ऑलराइट, फॉर एग्जांपल पहले रिसेशन का साइकिल होता है, फिर बूम करता है, पीक बनाता है, फिर नीचे आता है, फिर बूम करता है, फिर रिसेशन आता है, फिर बूम करता है, फिर रिसेशन आता है. इस तरह से हमारी साइकिल जो है वो रन करती है. राइट, इस तरह से हमारी बिजनेस साइकिल रन करती है. राइट, साइकिल इंडिकेटर हमको यही चीज बताता है. साइकिल इंडिकेटर हमको बताता है कि हमारे जो स्टॉक में है, हमारे स्टॉक में साइकिल अवेलेबल है कि नहीं है, साइकिल प्रेजेंट है कि नहीं है, एट व्हाट लेवल द साइकिल इज प्रेजेंट ओवर देयर. ओके, दैट इज योर साइकिल इंडिकेटर. सो एज यू ऑल नो दैट हमारा इंडिकेटर जो है, इस तरह से अगर हमारा स्टॉक जो इस तरह से कुछ मूव करता है, सपोज इस तरह से मूव करता है, सो दिस इज वन साइकिल, एंड देन अगेन स्टॉक विल मूव अप, again stock will come down at this particular level, from again the stock will move up, again it will fall down to this level, again from here to it will start moving up. So this can be a recession period, or you can say that this can be a correction and then an upward move, or you can say this is a boom period. Right, this is again a recession, this is a boom period, this is again recession, and then again a boom period. So the same thing happens in the stock as well. कोई भी स्टॉक जो होगा, अगर एक पर्टिकुलर साइकिल के अंदर होगा, तो कुछ अगर अपवर्ड साइकिल के अंदर होगा, यानी स्टॉक जो है हमारा ऊपर की तरफ अप ट्रेंड में जा रहा है, तो साइकिल कुछ इस तरह बनेगी, उसकी साइकिल कुछ इस तरह बनेगी. ओके, और अगर हमारा स्टॉक जो है वो नीचे की तरफ अगर होगा, मान लो हमारा जो स्टॉक है वो नीचे की तरफ है, तो साइकिल कुछ इस तरह से बनेगी. अगर हमारा स्टॉक नीचे की तरफ है तो साइकिल कुछ इस तरफ से बनेगी. ओके, सो यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टॉक नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया. तो यहाँ पे दिस इज अ करेक्शन, दिस इज ट्रेंड, करेक्शन, ट्रेंड, करेक्शन, ट्रेंड. सो इस तरह से हमें क्या करना है, साइकिल इंडिकेटर का यूज करके हमको ये पता लगाना है कि स्टॉक कहां से कहां तक करेक्ट करेगा, लाइक स्टॉक कहां तक करेक्ट करेगा, और कहां से इसमें फिर से ट्रेंड बनेगा, कहां करेक्ट करेगा, कहां ट्रेंड बनेगा, फिर कहां से करेक्ट करेगा, ट्रेंड बनेगा. सो फॉर दिस पर्टिकुलर साइकिल, वी यूज डीपीओ.
The trended price oscillate. The trended price oscillate. Okay. One second, guys. Huh? Just hold on for a minute. Guys, just give me 1 minute. Huh? Okay, so sorry for the delay. Let's continue. So what does this the trended price oscillator does ना? I'll just tell you कि अगर हमारा ट्रेंड इस तरह से है, हमारा ट्रेंड अगर मान लो इस तरह से चल रहा है, suppose our trend is like moving like this. Our trend is like moving like this. This is a swing low. This is called swing low. This is called swing high. SL swing low. SH swing high. Swing low. Swing high. Swing low. Swing high. So what does DPO does is that there's a trend, right? Okay, there's a trend right now. What will DPO do is DPO is going to remove this trend from this movement. इसमें से ट्रेंड निकाल देगा. Alright, इसमें से ट्रेंड निकाल देगा. So what will DPO do is DPO will remove the trend and you will be left with something like this. Okay, so it means that uptrend, down. Alright, so trend में से swing को निकाल दिया. So this is a swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high. So देखा आप लोगों ने, sorry, swing high, swing low, ये down trend. Alright, so इस तरह से हमारा जो DPO होता है वो वर्क करता है. Okay, so अगर आप DPO का फॉर्मूला देखोगे, let's if we go through the DPO formula, so you are going to find that DPO is nothing but price into X, that is the period. कितने पीरियड का हम लोग मूवमेंट देख रहे हैं. So 14 periods, 21 periods, 20 periods, 25 periods. So we basically look for like 21 period. Okay, 21 period. So 21 divided by 2 plus 1 periods less ago the X period simple moving average. For इसका मतलब ये क्या है कि यहाँ पे जो simple moving average था, एक particular stock का एक simple moving average था, से 21 moving average था, उसमें से हम लोग ने प्राइस को जो है निकाल दिया है. All we got is this kind of movement जो हमको बता रहा है कि हमारे स्टॉक का स्विंग किस तरह से है, कहाँ पे हमारा स्विंग कर रहा है, अब ऊपर की तरफ कर रहा है, नीचे की तरफ कर रहा है. That's what you get. Okay, so let's go to the indicator and let's see how it works. So let's come to the chart over here. Let me remove all these indicators.
Okay, so here you have got Reliance. This is a weekly chart of Reliance. Indicators, you have to type DPO over here. Okay, you have to type DPO over here. Okay, Utkarsh, देखो इसका जो फॉर्मूला है, it's like x divided by 2 plus 1. Okay, that is the price. Say x is your price into x is your period. कितने पीरियड का आप मूवमेंट देख रहे हो, कितने पीरियड में आप साइकिल देख रहे हो, से 21 और 21 डिवाइड बाय 2 plus 1. Okay, x यानी 21 period divided by 2 plus 1 periods less ago the x period simple moving average, यानी x period जो भी होगा हमारा उसका जो simple moving average होगा. ओके, उसमें से जितना भी सिंपल मूविंग एवरेज होगा उसमें से मैं यहाँ पे प्राइस को निकाल लूंगा. सो व्हाट आई विल गेट इज जस्ट अ मूवमेंट लाइक दिस. ओके, नथिंग एल्स. ऑलराइट, so here you can see you have to, what do you have to do is you have to go to indicators में you have to type DPO, the trended price oscillator, and here just look at this is a DPO. इसका आप जो है थोड़ा सा डार्क कर लो कलर थोड़ा सा, एंड इसको बाकी इसमें एक जीरो लाइन होती है उसको आप लाइन बना दो एंड जस्ट चेंज द कलर ऑफ द लाइन एंड ऑल. तो ये आपको एक क्लियर थोड़ा सा पिक्चर मिल गया डीपीओ का. अब देखो गाइस, इसको थोड़ा सा जो ट्रेड करना है थोड़ा टेक्निकल है. ओके, थोड़ा सा टेक्निकल है. इसको ध्यान से समझिएगा. तो देखो गाइस, there is a zero line because it is also an oscillator. Alright, and I know हम लोग यहाँ पे कोई चीज प्राइस से हम लोग ने से इसका मूविंग एवरेज माइनस किया तो डेफिनेटली जो बीच का पॉइंट होगा दैट विल बी अ जीरो लाइन. ऑलराइट, जो बीच का पॉइंट होगा दैट विल बी अ जीरो लाइन ऑब्वियसली. सपोज इफ द स्टॉक इज मूविंग लाइक दिस ना, ऊपर की तरफ जब स्विंग चल रहा है, सो योर डीपीओ विल बी ट्रेडिंग अबव द जीरो लेवल लाइक दिस. ऑलराइट, इस डीपीओ को जनरली डिफॉल्ट पीरियड दिया जाता है, वो 21 लिया जाता है. आप इसको इसका पीरियड आप चेंज भी कर सकते हो कि एक इवन 20 डेज डीपीओ, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. आप 20 दिन का डीपीओ ले सकते हो. और आप 20 दिन का डीपीओ भी ले सकते हो, क्योंकि अगर आमतौर पे देखा जाए तो हमारी जो ट्रेडिंग होती है, ओके, हमारी जो ट्रेडिंग होती है पूरे वीक में वो आपकी क्या कहते हैं, अगर हम सैटरडे संडे निकाल लेते हैं, सो वी गेट लाइक 4 सैटरडेज 4 संडे, दैट इज 8. तो टोटल जो हमारे पास टाइम होता है वो होता है 22 डेज का. हमारे पास जो है ट्रेडिंग टाइम होता है. हम लोग पूरे महीने में 22 दिन ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि 8 दिन हमारे 4 संडे 4 सैटरडे. ओके, हमारे ये क्लोज होता है, मार्केट क्लोज होती है. बीच में एक आध दो दिन हमारा जो मार्केट में कभी कोई वो आ गया तो उसका बफर पीरियड हम लोग एक दो पीरियड और ऊपर नीचे ले लेते हैं, क्योंकि उसमें हमारा कभी भी कोई हॉलीडे पड़ सकता है, कुछ भी पड़ सकता है. तो एक पूरे मंथ में साइकिल हम देख रहे हैं कि हमारा किस तरह से मूवमेंट दिखा रहा है द होल मंथ. दैट इज व्हाई वी टेक 20-21 पीरियड के अराउंड हम लोग डीपीओ को लेते हैं. सो यू कैन जस्ट कीप इट लाइक 20-21, कुछ भी आप इसमें 20-21, और यू कैन इवन टेक 22, कोई ऐसा इशू नहीं आएगा. 22 का डीपी भी आप ले सकते हो. ओके, सो जनरली डिफॉल्ट हम लोग 21 के ही रखते हैं. ठीक है, 21 का ही हम लोग डिफॉल्ट पीरियड रखते हैं. And we look at the DPO and try to analyze the swing available in the market. So what happens is, right, कि अगर suppose हमारा stock इस तरह से ऊपर move कर रहा है, so what will happen whenever the stock is moving in an uptrend like this, the DPO will be above the zero level and it will be trading like this. It will be trading like this. And whenever the stock is like trading like starts trading like this, okay, making a downtrend, our DPO will be trading like this below the zero level. So this tells you that कि यहाँ पे अगर आप देखो इस तरह से स्टॉक ऊपर गया नीचे आया, your DPO will go up, come down to zero level, and from here the stock will again move up and your DPO will also move up again. So whenever you see a retracement from a zero level, you can say that okay, this particular level is the swing low, and from here the stock might move up. Why? Because the DPO has started moving up from this particular level. So you can place a buy order when your DPO retraces from the zero level. This is zero level. जैसे zero के level के पास से retrace करेगा, you can open a new buy position, but after looking for a bullish candle pattern. Bullish candle. Okay,
बुलिश कैंडल पैटर्न, कोई बुलिश कैंडल होना चाहिए, फॉर एग्जांपल a bullish engulfing pattern or bullish harami pattern or anything like that. There has to be a bullish candle available, then only you're going to take the trade on that particular stock. Okay, आप तभी जो है उस particular stock में कोई trade उठाओ. Okay, now so जब भी हमारा stock अप ट्रेंड में रहेगा, so कुछ इस तरह मूव करेगा, like this डाउन ट्रेंड में होगा तो जीरो लेवल, like this, just like this. अब इससे हम लोग ट्रेंड रिवर्सल का भी बता सकते हैं, या हमारी साइकिल चेंज हो रही है हम ये भी बता सकते हैं. कैसे बताएंगे हम लोग कि हमारी साइकिल चेंज हो रही है या कुछ चेंजेस आ रहे हैं इसके अंदर? सो बहुत सिंपल है. इफ सपोज इट इज मूविंग लाइक दिस एंड देन इट क्रॉसेस बिलो द जीरो लेवल, एंड इफ इट मेक्स समथिंग लाइक दिस, जहां पे ये दूसरी बार कंटिन्यू करता है फॉल करना, this signifies that okay the cycle is changing. For example, in Reliance what happened over here was कि यहाँ पे हमारा जो डाउनवर्ड मूवमेंट था, काफी अच्छा डाउनवर्ड मूवमेंट आया था, इसकी की तरह नहीं, छोटा सा ये नहीं, ये तो मे बी बिकॉज ऑफ सम न्यूज एंड पर्टिकुलर न्यूज ये छोटा फॉल आ सकता है, बट लुक ओवर हियर, दिस वाज अ डीप डाउनवर्ड मूवमेंट इनटू द डीपीओ, यानी स्टॉक हमारा डीपीओ के अंदर गया. ओके, यहाँ पे अब ये ऊपर जो गया ना, इसने वापस इसको क्रॉस कर दिया. It has crossed above the zero level again. This is showing that okay, the stock will continue moving in this particular cycle. इस साइकिल में कंटिन्यू करेगा. अगर ये यहीं से मान लो इस पर्टिकुलर लेवल से नीचे आ जाता, and it would have made something like this, so we could have said कि okay, now the Reliance will fall more in the downward cycle because that's what was happening in the stock. Okay, ये चीज समझे आप? देखो जब भी ये जीरो के ऊपर है, लुक एट दिस, जस्ट लुक एट दिस, swing low, a hammer pattern, again अच्छा upside, again at the zero level, alright, bullish engulfing pattern. तो आपको जीरो से स्विंग पकड़ना है, you have to buy at this swing low. ये swing low है, this over here is a swing low, and again you can see you have got a bullish pattern over here in this particular point. You can see this over here यहाँ पे, okay, and यहाँ से देखो bearish, this is a bullish harami pattern. Look at this, it's a spinning top as well as a bearish harami pattern over here. Look at this, it's a bearish harami pattern with a spinning top. So from here you can say that okay, that the stock might, as it has taken the retracement of the zero level, so we can assume good upside in the stock looking at this. Okay, so फिर से मैं समझाता हूँ इसको, ध्यान से इसको समझिएगा आप लोग, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा इसको. I explained again. Understand this very carefully. This over here is your zero level. This over here is your zero level. The stock is moving like this. Okay, your DPO will move like this, swing low, swing low. Again will move like this. तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक हमारा ऊपर मूव कर रहा है इस तरह से. उसके बाद अगर इसने नीचे की तरफ ब्रेक करा, if it breaks below like this, so यहाँ से अगर इसने एक मूव इस तरह बना दिया, something like this forms, it means that this cycle is complete, this upward cycle is complete, and now the stock is entering into the bearish cycle, and the stock will start going down. So this is your DPO, determined price oscillator, from where an indicator from which you are removing the trend itself. आप price में से trend को निकाल दे दो. Okay, you are removing the trend from the price, so you just got the simple movement of your price, कि how the price is moving. That's it. Okay, that's it. और अगर मान लो स्टॉक नीचे की तरफ गिर रहा है, so कुछ DPO हमारा जीरो के नीचे रहेगा, trace near the zero level. अगर ये ऊपर की तरफ मूव करा like this, तो ये भी ऊपर की तरफ जाएगा, and if it makes a pattern like this and takes a retracement again at this particular level, so we can say that okay, this downward cycle is now complete and we can expect a new upward cycle and the stock will start moving. So this is one of the best swing trading strategy available out there for you. इसको completely मैं बताऊंगा when I teach you Fibonacci. तो मैं आपको इसको completely explain करूंगा.
All right, I'll explain this to you completely जब हम फिबोनाची को देखें. Okay, अभी इतना समझ में आया आप सबको? Guys, are you clear with this? ये थोड़ा थ्योरी पार्ट समझ में आया आपको? Okay, so what time do we have to enter? देखो, DPO आप जहां आप DPO ऐसी जगह यूज करोगे, you are going to use DPO. Yeah, definitely. देखो, मैं अभी ये चीज सारी चीजें क्लियर कर दूं. देखो, DPO will work the best when there will be where there will be a trend available, something like this. Trend available है. Okay, the place where there is trend available. Okay, जहां पे trend available है वो हमारा DPO. तो अगर आपको डेली टाइम फ्रेम में if you are getting a trend like this, where the stock is making a higher low, higher low, then the DPO will definitely work. But in intraday what happens is, you all know what happens is कि हमारा जो स्टॉक है वो इस तरह volatile होता है. Okay, in intraday the stock moves like this, not in a very good trend. So DPO को intraday में use करना is not a very good idea. DPO we basically use for the swing trading. DPO हम लोग जो use करते हैं that basically for the swing trade. Where there is a good trend available, we can simply use DPO. Okay, जहाँ पे भी swing available होता है. हाँ, इंट्राडे में भी आपको पीरियड 21 ही रखना है. यू हैव टू कीप द पीरियड 21 itself. ओके, दैट्स द डिफॉल्ट पीरियड फॉर डीपीओ एंड यू जस्ट कीप इट 21. ओके, हम लोग 21 पीरियड का ही डीपीओ लेंगे. ऑलराइट, विल जस्ट टेक 21 पीरियड. बट इंट्राडे में हम लोग डीपीओ का ज्यादा यूज नहीं करते. सपोज हम लोग जब इंट्राडे में ट्रेड करते हैं ना, सो वी डू नॉट ट्रेड डीपीओ फॉर इंट्राडे. दैट इज फॉर स्विंग ट्रेडिंग. डीपीओ इज बेसिकली फॉर स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग. ओके, yeah, daily and weekly time frame will help you in your swing trading. Daily time frame, if you're getting a DPO, if in a if in a daily time frame you're getting a swing or say an uptrend or a downtrend, and if in a weekly time frame you're getting an uptrend, now downtrend, you can just simply trade that. Okay, so let me just explain it to you just once more. As you said कि हम लोग को सर एंटर कहाँ करना है. So देखो, मैंने आप लोगों को पहले बताया इसमें दो एंट्री पॉइंट्स होती है. Okay, no, sideways will not work. Why? Because sideways में DPO will work like this. Okay, sideways में DPO will work something like this. Alright, यहाँ पे तो there is no clear indication that where the stock is gonna be or what is the cycle in the stock. So sideways में हम लोग जो कोशिश करते हैं कि DPO को हम लोग नजरअंदाज कर दें in a sideways trend or in a in intraday most probably. So देखो, there are two entries which you get from DPO. Understand this very carefully. Two entries when you get in the DPO. One is when the stock crosses from the zero level, okay, from above to below, you get a sell entry. You can short swing, you can short sell the stock, maybe a future of the stock or a put option. And if you think that this is, suppose you are in a downtrend, so what you can do is you can buy when it crosses above the zero level. Okay, this shows that okay,
the cycle might change and we might see some upside movement in the stock when it crosses above the zero level. But a better trade would be a retracement rather than entry. अभी तक मैंने आप लोग को जितने भी बताया सब में मैंने आपको बताया कि अगर क्रॉस ओवर होता है, से फॉर एग्जांपल मैकडी में जीरो के ऊपर क्रॉस ओवर होता है, और आई टोल्ड यू दैट यू नो मैकडी में आपका सिग्नल लाइन मैकडी लाइन क्रॉस ओवर होता है, डीआई में 20 के ऊपर क्रॉस ओवर होता है, आरएसआई में 50 के ऊपर क्रॉस ओवर होता है, तब एंट्री लेते हैं. Here the good entry which you get is not at a crossover but at a retracement. Yeah, definitely we have to check the candle pattern. So not at a crossover but at a retracement. What does that means is suppose if my stock is falling down, falling down. So where will I enter? I will enter when my stock retraces from this particular level. So suppose this is the level from where it is falling down, it is retracing. So I will take the trade over here when it will retrace, and I will sell the stock. And suppose if I'm buying the stock, so suppose if the stock is moving up like this, so where will I enter? I will try to enter at this particular retracement. मैं इस retracement पे buy करूंगा stock. So this will give you a better call than a crossover. Why? Because crossover does not necessarily means कि हमारा reversal आ जाएगा या हमारा cycle change हो जाएगा, unless and until it is confirmed by another retracement. Then only we can confirm, but still we can get a buying or selling entry from this level because something is happening. The stock is actually crossing from below to above, from a zero below the zero level, that is a bearish level, to above to the bullish level. So it means that something has changed. So we can expect a good price movement from here also. So हम यहाँ पे भी buy कर सकते हैं. But this signal is not as strong as this particular signal. It is though a strong signal. A reversal might come when it crosses the zero level or below the zero level, but it is not as strong signal as a retracement from this zero level. This retracement gives you a better signal for your trade. Yeah, I'll just show it to you in the chart itself. Okay, I'll just show you it in the chart. Let's move on to the chart here. Let's move on to the chart. Just look at this over here. The stock falling down. So we got a retracement if it is forming a V. If it is forming a V, for example, at this particular point, देखो यहाँ से नीचे गया, and it took the retracement of zero. ये exact zero का retracement लिया है. This cannot be a coincidence. It means that the stock holds the zero level. Not just here, look over here also. Again took a retracement of zero level. Again took a retracement of zero level. All right. Again a retracement of zero level. So this is not a coincidence. The stock is actually moving in this swing. Stock is actually moving in an upward direction, upward movement, upward swing. So you will enter at this particular candle. Now look at this particular candle. All right. यहाँ पे आप enter करोगे, and from here you can see that. Got good. Okay. All right, guys. This particular candle. So you'll enter at this particular candle. Or maybe suppose you missed that entry, again the stock hit the zero level, so you could have entered at this particular point, a bearish Arami pattern, and from here the stock. So that's how you need to enter. Again, look at this. Even though the stock crossed below this level here, but it did not continue moving downwards like this. Okay, it did not continue moving like this, and it moved above. It means what? That this particular swing will continue moving. We got a bullish engulfing pattern from here this time. So that's a very good trade to go. Okay, so stock entered from the bearish level to bullish level, got a buy signal with a bullish engulfing pattern, and you got it. How to set targets for this scene?
फॉर टारगेट्स आई टोल्ड यू ना, मैं टारगेट्स आपको बताऊंगा, ओके, नॉट टुडे, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में और टुडे इटसेल्फ, लेट्स सी। सो टारगेट हम लोग यूज करते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन। Okay, so this will be my target for the Reliance trade if I am taking a trade at this particular level. So my target would be the target number 1, target number 2, target number 3, and if you see that I have achieved all the targets, and you can see that the stock has taken some retracements from my level also, that means that my targets were good. Okay, my targets were good. All right, guys. Sure. अच्छा guys, one thing I will tell you, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, as I have started giving you trades, right? मैंने आप लोग को ट्रेड देना शुरू करा है, तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग मान लीजिए कॉलेज में हो या कहीं पे भी हो एंड यू आर नॉट एबल टू ट्रेड, तो आप कॉल लेके थोड़ा रिस्क लेके ट्रेड कर सकते हो, बट अगर आपके पास, बट सपोज इफ यू गेट टाइम ना, इफ यू हैव से आपके मोबाइल अवेलेबल है, you have your computer available in front of you, तो एक चीज का ध्यान रखना, जैसे आज मैंने आपको एक कॉल दिया था, I gave you a call on Bajaj Consumers, okay? I gave you a call on Bajaj Consumers. So ये चीज मैं हमेशा बताता हूँ उन लोग, आप क्योंकि आप लोग नए बैच के हो, अभी आपसे पहले मैं दे रहा था, सबको मैं बता चुका हूँ, बट क्योंकि आप लोग को मैंने अब कॉल देना शुरू करी, so I would just like to inform you about this. तो जब मैं आपको ट्रेड दे रहा हूँ ना, when I am giving you a trade, okay, so for example I give you a trade over here, all right, I gave you a trade over here, actually here I saw a gap up, all right, I saw a gap up, and I saw that okay, from this particular level the stock might take the, this is a trend line for this particular stock, and as it has gap above, and all the जितने भी मैं indicators say, they were all very bullish, even though because यहाँ पे already यहाँ पे gap up बड़ा आया था, so I was expecting the same price, and I was expecting stock to break this level 153 का, to break this level and to move to till this level. ये मेरे एक्सपेक्टेशन थी आज के कॉल से। देखो अब यहाँ पे मैंने एंट्री नहीं ली और आपको मैंने बताया था कि गैप फिलिंग आ सकती है, दिस इज कॉल्ड गैप फिलिंग। जब मैं कहूँ ना कि गैप फिलिंग आ सकती है, ध्यान रखना, so this over here is called gap filling when the stock opened at this particular level and started moving down, this is called gap filling, all right, this is called gap filling, one thing. Second thing, when I say अगर मैं आपको 915 पे कोई ट्रेड दे रहा हूँ, if I am giving you a trade at say 915 या 930 के बीच में, जैसे आज मैंने आपको 922 पे ट्रेड दिया, ठीक है, so suppose अगर मैं आपको 930 के बीच ट्रेड दे रहा हूँ, you don't have to trade on the immediate candle first of all, always remember this, immediate first candle पे आप ट्रेड नहीं करोगे, why? Because after an upward movement the stock might fall down, just like what happened here, okay, number one. Number two, when I say buy above this level, say 153, 154, whatever level I'm saying, so you have to buy when the next candle, a candle after this moves above this particular level, then you have to enter, okay, number one. Number two, it would be better to enter if the stock closes above this level. For example, the stock closes above this level and then a new candle is formed above this level, so एक close हमारी entry पे अगर हमको मिलता है, that is a very good call to take. तो अगर मान लो यहाँ पे ये कैंडल यहाँ क्लोज हो जाती ना इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, तो फिर एक अच्छा हमको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलता है स्टॉक में, and would have made this much of profit today, okay, but क्योंकि स्टॉक से ऊपर टच करके नीचे आ गया, so we did not get our entry and we do not take the trade, okay, so close अगर हमको मिलता है इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, then only we are going to take the trade. तो आपको अगर कहीं भी ट्रेड लेना है, कोई भी मैं आपको कॉल दूं, just have a look at this at once कि क्या स्टॉक क्लोज दे रहा है मेरे एंट्री लेवल पे, if it is giving a close, okay, candle 15 मिनट्स का कैंडल क्लोज हो रहा है, then I will go for the trade, or else you can leave the trade, okay, you can leave the trade, alright. बट ऐसा देखो, अब जैसे मान लो सिंपली अगर मान लो यही क्रॉस करके होता है, वुड हैव बॉट आवर एंट्री में हमको मिल जाता, तो हम थोड़ा रिस्क लेके फिर ट्रेड के थ्रू चले जाते, हम ट्रेड कर लेते. But if it is giving you a close, that means okay, it is more safer than the previous one where the candle just touches above or crosses of the level and comes down, okay, जहाँ पे close नहीं मिला.
सो ये थोड़ा सा चीजें ध्यान में आप लोग रखने की कोशिश करना जब भी आप मेरा ट्रेड ले रहे हो, ठीक है। What all the time things you check in the live market to quickly take the decide the trade? देखो मैंने कहा ना, मैं स्ट्रैटेजी बेस पे ट्रेड लेता हूँ. I trade on the basis of the strategy. For example, right now you can see what pattern is it forming, guys? कौन सा पैटर्न फॉर्म हो रहा है? A descending triangle, right? Very good, Harshal. So now first thing which I look is the price action. The first thing which I look is the price action. All right, ठीक है. सबसे पहली चीज मैं क्या देखता हूँ? प्राइस एक्शन देखता हूँ. All right, so here it is forming a descending triangle. Now next day अगर मुझे आपको कॉल देना है सेम इसी पर्टिकुलर लेवल, इसी पर्टिकुलर ट्रेड में, बजाज कंज्यूमर में, इसी स्टॉक में, so I will give you a trade when it will cross below this particular level. जब इस descending triangle को ये break करेगा. Very good, Anirudh. When it will cross below this descending triangle and give a close, then only I'm gonna enter. All right, first thing I look is the price action. Is it trading above a trend line? Is there some pattern formation taking place in that particular level? For example, look at this. If you see, this is a double bottom, but it's not a very good one. Why? Because there was a trend. Something like this would have been a better double bottom, but yes, it's in the trend. It's forming a pattern like this. All right, same bottoms at this level. The stock is not going to cross this level. The bears are not, the bulls are not letting the stock to cross below this level. So this is a price action, and we can expect, okay, this neckline is broken, and now from here the stock might move up. अब देखो guys, आप अगर देखोगे इस चीज को, this is my neckline over here. Look at my neckline. This is my neckline over here, and this over here is my, say, this over here is my target. So if you see that actually मैं अगर gap up नहीं हुआ था, I would have achieved my target. Just look at this. बिल्कुल ये particular level तक इसने स्टॉक ने क्लोज दिया. देखो आप, ये देखो टच करके आया, exact same level. Stock has touched and moved down. So it means this justifies my double bottom pattern कि मेरा नेकलाइन का और इसका जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस तक गैप अप करके गया है. अगर ये गैप अप नहीं करता, अगर ये स्टॉक गैप अप नहीं करता, so it would have moved something like this. इस तरह से मूव करता. Okay, and I would have entered over here and पहले टारगेट पे मैं एग्जिट कर लेता. All right, so that's how you look for the trade. First thing you see is a price action that is forming in that stock. For example, Bajaj Consumer right now is forming a descending triangle, and you get patterns like I get a double bottom, I get a descending triangle. You will get patterns like this, and you have to first thing you look at is the price action. Then you move on to the strategies. For example, like I open like say 4 windows over here. मैंने 4 windows खोल के रखे हैं. On one side, I enter all the trend-based indicators which I use, MACD, DIN, moving averages, जो मेरी trend-based strategy मैंने आपको सिखाई है. On this particular candle, this particular level, I open 3 indicators. आप देख भी सकते हो, MFI, sorry, I open MFI, CCI and RSI. एक जगह मैं खोल के रखता हूँ. Like here, look at this. I open MFI, RSI, CCI. एक जगह थोड़ा मिक्स स्ट्रैटेजी रखने की कोशिश करता हूँ कि मैं वॉल्यूम को देख लूँ, थोड़ा सा मोमेंटम देख लूँ, एंड प्राइस एक्शन एंड इंडिकेटर. फॉर एग्जांपल दिस ओवर हियर इज योर ट्रेंड, moving average is telling me the trend. Then I have the MFI that is a volume indicator, and then CMF that is a MFI that is a momentum indicator, and CMF that is a volume indicator. So ये एक मेरा ये ट्रेड हो गया. And then on the fourth one I keep my Ichimoku, that is a advanced level technique. Ichimoku जो आगे आपको सिखाऊंगा. So like this. So whenever I get an entry from any particular level, for example, my MFI is crossing of the 50 level. That's mean that is an entry point for me. Or my MFI is showing a divergence, or my CMF is showing divergence, or I get a buying signal at particular level over here. For example, look at this. RSI Reliance crossed above the 0 level, MFI crossed above the 0 level, CCI crossed above the 0 level. I got a buy entry on Reliance at this particular candle. So I will just place a buy order for Reliance, or I will just give a Reliance call. आज मैं थोड़ा सा और बिजी हो गया, मॉर्निंग मैंने आपको दूसरी कॉल नहीं दी.
actually registration चल रहे हैं and नया बैच शुरू होने वाला है, so got busy with all those things. So that's what happened कि यहाँ पे रिलायंस की एंट्री मिस हो गई. बट लुक एट दिस, 50 के ऊपर क्रॉस हो रहा है तीनों and the SCCI is crossed of the 100 level. So this is a buying call for me, and I will simply just go on Telegram and I will write that buy Reliance at this particular level, keep your stop loss below this level and you can trade. Okay, so इस तरह से मैं आपको मैं ट्रेड करता हूँ, and I have several monitors, not just this, I have several monitors where I use other indicators as well. Okay, so चार screen इसमें, चार उसमें, चार उसमें. So I have multiple monitors with me and I use them. Even though I am not in my home, I'm not in Mumbai, not in my office, but still I have multiple monitors. So I look at all those things. So plus आप लोग के भी messages आते हैं कि सर यहाँ पे trade लिया है, should I buy ACC, should I sell ACC, should I go? So आप लोग को एक monitor में देख के आप लोग की query solve करता हूँ, दूसरे monitor में मैं अपने trades देखता हूँ. So बहुत multitask करना पड़ता है मुझको morning में. So it's a very hectic thing for me. Okay, but anyway. So जब आप full time broker बनना है, आपको full time trader बनना है, so you will also require multi monitors and you will be requiring that, okay, to get your trade signals. Okay, so अभी फिलहाल के लिए हम लोग सिर्फ एक ही चीज पे स्टक करते हैं, बाकी फिर हम लोग बाकी चीजें बाद में देखेंगे. Okay, हाँ मैंने बताया ना वॉल्यूम इंडिकेटर. मैंने कहा ना आई यूज मल्टीपल मॉनिटर. सो मेरे पास चार स्ट्रैटेजी एक जगह है तो चार स्ट्रैटेजी दूसरी जगह है. वेयर आई हैव सम मोर एडवांस स्ट्रैटेजी. फॉर एग्जांपल दिस वॉल्यूम प्रोफाइल आप लोग को नहीं मालूम है, इस स्ट्रैटेजी के बारे में मालूम नहीं होगा, बट दिस इज अ वेरी गुड वेरी गुड indicator. All right, volume profile is a very good indicator. All right, I use this also. All right, in this volume indicator, this is called the point of control. This red line is the point of control जहाँ पे सबसे ज्यादा volumes, whenever the stock falls in these levels ना, इस particular level पे सबसे ज्यादा volume trade होती है. Okay, so this is your POC, point of control. So जब भी स्टॉक हमारे POC के पास से नीचे आता है, whenever the stock crosses below the POC के नीचे फॉल करेगा, so हम लोग को एक सेल की कॉल मिलती है, और POC के ऊपर जब ब्रेक करके जाता है, we get a buy signal. So और जहाँ पे इसके ये जो आप देख रहे हो वॉल्यूम्स यहाँ पे कम होने लगते हैं या यहाँ पे वीक होने लगते हैं, we exit the positions at that particular level. So you can see that the stock has moved below the POC, and here at this level the stock has started weakening down, the volume has started weakening down. So you can see from here the stock actually went up and moved above this level. So we can just sell at this level and we can exit at this level. So that's the other strategy which I use. So this is a volume profile. This is not included in this particular course. My advanced course जो बनाऊंगा, so volume profile will be included in that. So there are several indicators which I use and I give you signals. Okay. देखो आई टोल्ड यू गोल्डन क्रॉसओवर डज नॉट मीन दैट कभी गलत नहीं हो सकता है. ऑलराइट, गोल्डन क्रॉसओवर डज नॉट एक्चुअली मींस कि हर टाइम आपका व्हाट इज एडवांस कोर्स. अमनप्रीत, एडवांस कोर्स इज अ कोर्स जिसको मैं बना रहा हूँ, आई एम ऑन इट. और एडवांस कोर्स में आई एम गोना टीच मेनी मोर एडवांस strategies. For example, the volume profile which I just showed you, then there's a market profile, then there's advanced derivatives, iron condor, straddle, strangle, all those things. And then there's also Elliott wave theory and all those things, and harmonic patterns. All these things will be covered in the advanced course. Okay, so अगर इस course के बाद if you think that okay मुझे सर से और कुछ सीखना है, I want to learn some few things more, few advanced things, then you can definitely join my course. But that will happen, that thing is gonna happen uh, अभी उसमें थोड़ा सा I'm having difficulty making this course because of this lockdown. Everything just I'm good. I'm stuck with so many things, and I'm not able to focus on one thing. That is why अभी मैं advanced course बना, मेरा जुलाई से शुरू होने वाला था advanced course, but now I think that will take like first week of September or something like that. तब आएगा वो. Okay. हाँ, advanced course भी somewhere 2 महीने का होगा. Okay. So there'll be many more advanced strategies which you're gonna learn in the advanced course. Okay. Chalo guys, let's continue. Let's not stray away from this particular
I will talk to you about it later. जो भी क्वेश्चन क्वेरी आपकी है, अभी ये बताओ डीपीओ आप लोग को बेसिक समझ में आया कि नहीं आया? Did you guys understand what DPO means, what DPO is? For example, look at this. This is a downward cycle in a weekly time frame. It means that the stock is in a downtrend. Stock is in a downtrend, right? Look at this. So you will get a sell signal at every retracement near the zero level. Okay? Abhi kyunki Bajaj Consumer is not in F&O segment. All right. So we cannot do this shorting of this stock. But yes, we can. अगर हमको इंटरडे में कुछ ऐसे मिलता है, so we can simply trade it. Here you can see कौन सा पैटर्न बन रहा है यहाँ पे? Can anybody tell me which pattern is forming over here? Okay. Piercing pattern, piercing pattern. Okay, you guys are talking about candlesticks. I was talking about the price action on the pattern, reversal continuation pattern, which I taught you. Yes. So many are saying reverse mountain hill. Yes, of course, this is reverse mountain hill pattern forming in this particular stock. अगर आपको short term का trade लेना है, if you want to do a swing trade, okay, what you can do is you can simply just trade above this neckline. If the stock crosses up this neckline, you can simply trade for short term. और यहाँ पे you are gonna keep your targets to this particular level. So मैं आपको ट्रेड के साथ साथ बताते भी जा रहा हूँ ताकि आप लोग ध्यान रखो and you can make money. Okay, so this is your first target in the coming 2 or 3 weeks. If the Bajaj Consumer moves above this 158 level, then only you're gonna swing trade in this particular. तो आप वॉच पे डाल सकते हो इसको, अपने स्टॉक को वॉच पे डाल सकते हो, वॉच लिस्ट पे डाल सकते हो. And whenever you think that okay, the stock is crossed above the 158 level or is crossing, okay, or is crossing that particular level, तो आप वहाँ पे ट्रेड एंट्री डाल सकते हो and you can keep this as your swing targets. So मैं खुद ये swing trade लूंगा अगर यहाँ पे crossover आता है तो. All right, that would be a good price action move. Why? Because there has been a good reversal pattern forming. So we can expect the price to at least move to this particular support. देखो आप कितना अच्छा यहाँ पे support resistance actually stock को when it will cross above this level. तो देखा आप लोगों ने, this shows that my pattern is a confirmed pattern and we will definitely hit some levels over here if it crosses and closes above. So we can trade with a target of say 225 per target, or I can do a swing trade in this particular stock Bajaj Consumer. That means 100 almost 70-80 points का profit I'm looking at this in this stock. So ये एक आप जो है short term के लिए you can see a swing trade in this Bajaj Consumer. Okay, so चलो anyway let's continue. Breakout हो तभी buy करना. Okay. Amanpreet is saying what can you give us a brief summary about price action? What is price action? Amanpreet, कौन बताएगा price action क्या है अमनप्रीत को? Okay. Okay, so decision based on price. Now देखो simple है. Price action में these are the few things which come in the price action. Number one, trend analysis. Number two, chart patterns.
Number 3, demand supply. Number 4, candlestick patterns. All these are called price actions. All right. Trend analysis. What kind of a trend is this? It's a downtrend, of course. So where are the chances for the stock to go? Maybe आगे जाके इधर से move down. Okay, if this reversal does not sustains and the stock moves up, so it will definitely go down. Okay, we have to be prepared for that also. Huh? कि एक retracement आ सकता है and stock move down. Okay, other thing is chart pattern. So a pattern over here like inverse or reverse mountain hill. This pattern has been formed. This is a price action. Okay, then again, look at this over here. This is a spinning top with a bearish harami. Sorry, bullish harami pattern. This again is a price action. Okay. Then again, the stock is in this demand zone. This over here is a demand zone for the stock. This over here is a demand zone for the stock. This level, ये एक demand zone है. So stock is near its demand zone. So we can expect some upside price movement from this level. So this is a certain price action which you understand before taking a trade. अगर आप कोई भी trade देख रहे हो, you have to see what kind of price action is forming. All right. ये डिमांड सप्लाई जोन जो एक्चुअल में डिमांड सप्लाई जोन वाली थ्योरी दैट इज आई हैव केप्ट फॉर द एडवांस कोर्स. ओके, मैं अभी आप लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करना है. ओके, सो यू कैन एक्सपेक्ट दिस टू बी अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस. आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की थ्योरी को यूज करो. फॉर एग्जांपल दिस ओवर हियर, यहाँ पे आप देखो इस पर्टिकुलर लेवल पे द स्टॉक हैज गिवन अ वेरी गुड सपोर्ट previously. So look at this, the stock has given a previous support at this level, so this holds my support level. Okay, and also it has given a resistance at this level. Just look at this, a reversal resistance at this level. So this is a good line for my support and resistance. So support and resistance भी आपका price action में. Am I clear with price action now, guys? अब आप लोग को मैं सभी चीज पढ़ा चुका हूँ except for demand supply. वो भी इतना ज्यादा वो नहीं है. अभी आप support resistance पे ही रहिए. आप support resistance को use करके ट्रेड करिए. बाद में demand supply की चीजें मैं आपको बताऊँ. Okay, guys? ठीक है? Am I clear? Price action क्या होती है? Next time आप लोग मुझसे ऐसा question मत पूछना. Okay? कि सर price action क्या होता है? Because I have already taught you each and everything. Alright? सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूँ, सिखा चुका हूँ. So ये देखो आप, this is a mountain hill, this is a reverse mountain hill, this is, you can say head and shoulder, head and shoulder patterns, neckline, reversal. So आपको अलग अलग price action मिलेंगे and you have to trade them accordingly. So right now it's an inverse mountain hill pattern. You can see an upside movement in the stock. All right, so let's get back to our DPO. अभी DPO आप सबको guys clear है? For example, just look at this. When the stock was moving up like this, retracement from here, so we got a buying signal. Okay, अब देखो इसने नीचे की तरफ गया. Okay, it went down. Look at this, guys. What I am telling you, जो मैं आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा था. अगर हम इसको पहले सबसे पहले आप as a whole देखो, understand this as a whole. It is something like this. It's been formed, right? And then it crossed below this level. Okay, and then it moved down. Okay, अगर ये कुछ इस तरह का मूवमेंट देता जैसे अभी दिया है, she would have said कि okay, downtrend will continue. Even though यहाँ पे uptrend था, stock should have moved up, but again the stock went down. And here we got a confirmation at this particular level कि okay, this actually is a downtrend, or we can say, so for sorry, actual यहाँ पे हमको मिला है confirmation. Stock crossed below the zero level, took the retracement of the zero level and went down. So this gave me a confirmation that my Bajaj consumer has entered into the bearish zone and into a bearish cycle, and it is gonna continue for long. Okay, bearish cycle के अंदर है, long तक continue करेगा unless until this breaks above this particular zero level and then forms something like this.
So we will say, okay, now the stock has, you know, changed the cycle and now we can expect some upside move. So अगर हमारा DPO भी अगर suppose हमारा जो DPO है कि यहाँ से ऊपर move करता है, so maybe like this and then it moves is like this, तो हम कह सकते हैं कि ठीक है, अब मेरा जो stock है वो अब से ऊपर move करेगा from here, it will start moving up like this, so I can buy Bajaj Consumer and long it for my as an investment. Okay guys, अभी clear है आपको? HDFC Bank using the DPO. So let's see what HDFC Bank is telling us. Okay, first of all, what chart pattern is here in the HDFC? What pattern is this? Reverse mountain hill, very good. This is a reverse mountain hill, right guys? So looking at this pattern itself, my target would be somewhere here, HDFC Bank in the future. इस जगह, okay, that is 1170 का 1120 का level HDFC Bank में आ सकता है. If it breaks this particular level, ये देख लो यहाँ पे एक resistance है इसका. If it breaks this resistance, ये 1120 के level पे जाएगा. That will be my first target in this. Looking at the DPO, what we can say is that अभी हमारा HDFC Bank अगर यहाँ से retrace करके नीचे की तरफ आता है, अभी तो upward move कर रहा है, there is a continuation, so ये भी हमारा ऊपर continue कर जाएगा and then it will move up like this. But if it goes to this level, yeah, somewhere from here, and it starts moving down and makes a B pattern, A pattern, then we can say that the HDFC Bank will continue this movement and will go down. Okay, will go down. यहाँ पे देखो जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था, there was always a retracement from the zero level. या जरा सा break करके because of the weakness or something break करके वापस ऊपर. It never formed another A pattern like this below this zero level. Okay. ये वाला हम लोग कंसिडर इसलिए नहीं करेंगे because this is far from the zero. Okay, हमें जीरो के आसपास से V देखना है या A देखना है. For a continuation, a bullish continuation or bullish cycle, what we have to see? We have to see something like this. For a bearish continuation, we have to see something like this. Okay, ये याद रखना. ऊपर वाला B, नीचे वाला A. This you have to remember. If it breaks with a higher value, volume higher break karega, it's okay. We can expect it to be somewhere at this particular price. But if it doesn't sustains over here by making a V pattern, तब तक हम लोग ये नहीं मानेंगे कि actually में cycle change हुई है. We will expect the price to gain unless until a V pattern is formed. So V pattern gives you a confirmation, just like here. What a V pattern? Look at this near the zero level. You've got a V pattern. So this gives you a confirmation that this is a कौन सा pattern है यहाँ पे? Which candle pattern is this, guys? आप लोग बताओगे मुझे. Which candle pattern is this? आपको इससे अच्छा swing trade कोई भी नहीं बता सकता है. Nobody can tell you a swing trade better than this. What pattern is this? Tell me fast. A bullish harami. Yes, it's a bullish harami pattern. A bullish harami pattern and a very good one indeed. And right from where there's a bullish harami pattern, we can see a V pattern forming in this DPO and the DPO moving above the zero level. That means this cycle is gonna continue and the stock will again move up. All right. So that's how you do your swing trade and you trade. Am I clear with DPO now, guys? Clear? Eh? Is the DPO clear till now? सबको ये चीज clear हो गया? In a V and an A. V in the bullish area above the zero level and A in below the zero, that will continue the cycle. Okay. So whenever you are going for a swing trade, do look at the DPO. Okay.
I will tell you that after the break. Harshal, that buying, selling, and the points which you're going to give, that will start after this 10 minutes break which you're going to take. 6:20 हो रहे हैं, 6:30 से start करते हैं, and then we'll continue. Okay? So जल्दी से आप लोग भी आ जाओ 10 minutes में, then we'll start. Okay? चलो, I'm putting it on mute, हाँ guys?
Okay, students, so let's continue. Is everybody here? Harshal is here. Okay, Ritvik is here. And Ritvik, Anirudh, Kunal, Prat, Manpreet. Okay, so everybody's here. All right. ठीक है, let's continue. So अब हम लोग बात करते हैं हमारे डीपीओ के बाइंग सेलिंग सिग्नल जो है. So for बहुत सिंपल है, इसको इतना ज्यादा एक्सप्लेन करना की जरूरत आप लोग को आई होप नहीं पड़ेगी. So first of all, the first signal which you get for a buy signal is if the stock is moving below the zero level and if it crosses above the zero level with good volume अच्छा होना चाहिए. If it crosses up the zero level, so we get a buy signal. All right, we get a buy signal. But yes, when it crosses above, you have to see that okay, there's some bullish pattern forming or something like that. Then only you're gonna enter. Okay, या एक bullish अच्छी bullish candle है, तो आप enter करोगे. Okay, so Kunal is also here. So first signal which you get when it crosses above the zero level from below, you get a buy signal. Second signal which you get, and a very strong one indeed, as I already told you, key retracement near the zero level. The zero, the stock will move down like this, up this. So if it crosses like this, or say crosses like this, you can just buy at these places. Okay. You can open a buy position here. तीन जगह ऐसा होगा, तीन चीज हो सकती है जीरो के पास, and they give you same signal, same buy signal. Number one, exact zero के level पे touch करके it make a V and moves up. Second, if it breaks the zero line but then moves up above the zero level, you get another buy signal. Third one is if it does not take a retracement from zero level but near it, near the zero level, and form something like this. Again, you can take that. You can again buy the stock here. The only conditions over here will be candlestick. So there has to be a bullish engulfing pattern or a hammer pattern, okay, or say there has to be a piercing pattern or even morning shower, so anything, any pattern, any candle pattern indicating that okay, the market's gonna rise from that particular level, we can place a buy order. So number one, ये आपके orders हो गए. Number two, if it is moving down like this and then crosses up the zero level with good volume and a bearish bullish candle, then you can again place a buy order at this particular. ये आपको बहुत very strong signals provide करेगा. This also gives you a good signal, but not as strong as this one. But still we give both the 5 out of 5 signal because they are giving us the buy signal. तो हम दोनों को 5 out of 5 देते हैं. चाहे zero के ऊपर जाए, चाहे retracement ले, we give 5 out of 5. Under zero level, which candle is needed in the sense I didn't get you. सोनम देखो, हमको देखना है अगर मान लो यहाँ पे it's something like this happens. Suppose ये इस तरह का कुछ होता है. देखो, something like this happens. Say this is a zero level and stock is below the zero level, something, and it's moving up like this near the zero level. And at this particular level, अभी zero cross नहीं किया है, but here it has made a good, I'll just take this colored pen. So let's say it is forming a bullish engulfing pattern. अभी ये zero के पास में zero cross नहीं किया, but it made a pattern like this, a bullish engulfing. On the next candle
ऑलवेज रिमेंबर, आप कैंडल पे जब मिलता है कोई पैटर्न तो आप कब एंटर करते हो? नेक्स्ट कैंडल। इफ एट द नेक्स्ट कैंडल द स्टॉक क्रॉसेस above the zero level, you can buy the stock. This is one thing. Second thing is, suppose something like this happens. This is the zero level. The stock is moving like this, moving like this, moving like this, और यहाँ क्रॉस करता है. And at this crossover, they say a bullish pattern forming. At this crossover, say a bullish Harami pattern has been formed. At this crossover, जैसे क्रॉस किया है, bullish Harami pattern बन रहा है, then again you can trade on the next candle. So in both the conditions you can trade. Either it is forming a bullish candle when it is near the zero level, or a bullish pattern when it is above the zero level. In both the cases you can place a buy order. Alright, अभी समझ में आ गया आप सबको? बाइंग सिग्नल क्लियर हो गया गाइस? बाइंग सिग्नल क्लियर हो गया? 5 out of 5 समझ में आ गया? One, you will give it when it will cross off the zero level. Second is when it will retrace from the zero level, you are going to give it a 5 out of 5. Am I clear with this, guys? Yes? Okay, superb. Now let's come to the next part, that is 4 out of 4, 4 out of 5. तो हम लोग 4 out of 5 कब देंगे स्टॉक को? Listen to this very carefully, guys. Now this is above the zero level. If the stock is above the zero level, if the stock is above the zero level, all right, if the stock is above the zero level and the direction is positive, okay, suppose you get इस तरह का आपको कंडीशन कुछ ऐसे मिलेगा, इसको ध्यान से देखना, ये कंडीशन कुछ इस तरह से आता है. सो यहाँ से मेरा कैंडल ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, then it's forming, it moves down a little bit, not a very much, but small retracement or something like this, and then again moves up, because बिल्कुल exact तो नहीं चलेगा मार्केट, थोड़ा बहुत फॉल आएगा, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होगा. So at this particular point of time, suppose if the stock is say like this, यहाँ पे जीरो के ऊपर, अभी जीरो के ऊपर चल रहा है, say at this particular level कुछ stock इस तरह से है, it is above the zero level and the direction was also positive, तो यहाँ पे still we can just buy at the next candle. हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं. We are not getting a buy sell entry, but yeah, we have to give it certain points, so we can give it like 4 out of 5 at this point. Okay, यहाँ पे 4 out of 5. Okay, if it is above, it has to be above the zero level and the direction has to be positive. That's the condition. It has to be above the zero level, or the stock has to have a positive direction. So it might be like this. Yeah, say maybe suppose इस तरह से हो सकता. Okay, so say ये थोड़ा सा नीचे की तरफ fall आया and then again went up. तो ये हमारी direction ऊपर की तरफ है. So we can give it a simple 4 out of 5. Okay. Now suppose something like this happens. That above the zero level, the stock is down like this. यहाँ पे भी देखो अभी नीचे fall आया है, right? So ये fall की वजह से maybe थोड़ा सा नीचे की तरफ move आ सकता है. So if it is above the zero level, but यहाँ पे आपका stock नीचे की तरफ face कर रहा है, यानी direction नीचे की तरफ face कर रहा है. So where's the direction of the stock over here? Suppose this is the move. The direction is down. It is though above the zero level, but the direction is down, indicating that okay, it might see a bit correction and then move up again. So we will give it a 3 out of 5. Simple as that. Alright, we can give it a 3 out of 5. Alright, okay. Next is, ये तो हमारा हो गया buying side. Selling side, same thing will be happening in the sell side. On the sell side, same thing in the sense कि suppose the stock, this is a zero line. First sell entry you will get when the stock will cross from above to below like this. So you will sell the stock. This is number one. Number two will be a retracement. Retracement in the sense that stock is like this. This is zero level, and stock makes an A or retraces from this level. यहाँ से retrace लेता है, so we can sell
this level also. So जब ये retrace कर रहा है, यहाँ पे हम इसको retracement पे 5 out of 5 देते हैं, या जब ये नीचे की तरफ break करता है तो we give a sell 5 out of 5. Okay, we give it a 5 out of 5. ठीक है, ये तो हो गया हमारा 5 out of 5. Now suppose if you are if the DPO is like something like this, ये हमारा जो stock है वो नीचे की तरफ है, कैंडल पैटर्न हो गए, कैंडल पैटर्न बेरिश कैंडल होना चाहिए. इट्स वेरी सिंपल. सपोज अगर ये इस तरह बनता है, ओके, सो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे कैंडल कुछ इस तरह का होना चाहिए. जैसे ये रिट्रेस करा, we got say a bearish Harami pattern. So retracement, bearish Harami pattern. So we can sell again. Stock will come down. Okay? या तो bearish Harami बन जाए और से bearish engulfing बनता है, shooting star बनता है, anything, any bearish candle if forms, then we can sell, simply sell it. Okay, like this. ठीक है, अभी I hope सबको समझ में आ गया होगा. Okay. ठीक है, क्लियर है, चलो, वेरी गुड सोनम. Now the 4 and 5 out of 5, 4 and 3 हम लोग कैसे देंगे, below the zero level, retracement already हो चुका है. Now the direction is downward, direction नीचे की तरफ है इसका. Alright, so this will give you a 4 out of 5. It means what, कि हमारा जो stock है वो might be falling like this, falling like this, falling like this, and then there has been a certain some, ये तो अभी continue करेगा, so maybe कोई upward move and then again fall, so ये continue करेगा. Okay, so this over here अगर direction नीचे की तरफ है so it's a 4 out of 5. One thing. Second, if the stock is down but direction ऊपर की तरफ, या यू कैन, अगर आप जीरो पे परचेज कर रहे हो एंड देखो, you have to sell the stock at a retracement if there is a movement like this. For example, if there is movement like this, for यहाँ पे आप इसको ध्यान से समझना, suppose there is some movement like this, zero level, and you bought at this retracement. The stock was going up, going up, going up, then it came down and took the retracement, and then again it made a bullish engulfing pattern and went up, went up, went up. ये कुछ इस तरह चलता है. And at this particular point, suppose हमारा DPO कुछ नीचे आने लगता है थोड़ा बहुत, इस तरह से यहाँ retracement. So you can either exit at this level. आप यहाँ पे exit ले सकते हो, यहाँ buy करके यहाँ पे exit ले सकते हो, और you can sell at a high. जब मैंने आपको बताया ना फिबोनाची का यूज करेंगे हम, so you can sell at high Fibonacci levels. That is a bit better because high Fibonacci levels पे हम लोग को अच्छी exit मिल जाएगी. यहाँ पे अगर मैं रिट्रेसमेंट का वेट करूंगा तो मे भी स्टॉक और नीचे आके फिर रिट्रेस करे, सो वहां पे हम लोग को थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो सकता है. So it's good always to use Fibonacci for your swing trade. And also I will tell you that Fibonacci is actually important, the most important indicator for a swing trade along with the DPO. So I'll tell you that also in the Fibonacci level. Okay, lecture. Okay. Alright guys, did you guys get it? तो यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं 3 out of 5 and 4 out of 5. मैंने आप लोग को पहले ही बताया, अगर जीरो के नीचे this is zero level and there is a retracement from the zero level like this, इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, मैं 4 out of 5 दूंगा. and if the direction is upward, मैं यहाँ पे 3 out of 5. okay, I'll give it a 3. okay guys, clear हुआ DPO?
गाइस क्लियर हुआ? डीपीओ क्लियर हुआ आप सबको? तो चलो अलग अलग स्टॉक पे जल्दी से देखते हैं कौन कौन से लेवल पे हमको डीपीओ मिलेंगे. नाउ वन मोर थिंग. अब आप लोग कहोगे सर अगर मेरा डीपीओ 0 के नीचे है तो कैन आई ट्रेड दैट इफ माय स्टॉक इज, मुझे लग रहा है कि स्टॉक ऊपर जाने वाला बट माय डीपीओ इज डाउन. तो इस सेंस में आप कब ट्रेड लोगे एंड हाउ मच आर यू गोइंग टू गिव इट? सो यू आर गोना गिव इट अ 3 out of 5. इफ यू आर बाइंग, इसको भी मैं फिर से ध्यान से समझा देता हूं आपको. इफ यू आर बाइंग, if you think that okay the stock has been making a double bottom pattern, ऑलराइट, और आपको लग रहा है स्टॉक ऊपर जाने वाला है बट आपने डीपीओ देखा तो डीपीओ तो यहाँ नीचे था, शुड वी टेक अ ट्रेड? शुड वी गिव अस सम पॉइंट्स? तो यस, अगर डीपीओ का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है जहां पे मैं बाय कर रहा हूँ तो बाय के लिए मेरा डायरेक्शन ऊपर की तरफ होना चाहिए. अगर डीपीओ का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो मैं इसको 3 out of 5 दे सकता हूं. आई कैन गिव इट अ 3 out of 5. ओके, if I'm getting a price action and my DPO is moving upward, so I can, if I'm on the buying side, मेरे सारे इंडिकेटर बाय कह रहे हैं, तो डीपीओ अगर मेरा ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा, so there's a chance that डीपीओ ऊपर मूव कर जाए. It's all about game of chance. So maybe there's a chance that if डीपीओ हमारा ऊपर की तरफ मूव कर जाए, because its direction is positive, so we can just give it a 3 out of 5. At least हम इसको मिस ना करें. Alright, so we give it a 3 out of 5. सेम थिंग विद द सेल साइड. अगर आपको लग रहा है कोई स्टॉक नीचे गिरने वाला है, इफ यू एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ अ स्टॉक टू फॉल डाउन एंड यू सी दैट स्टॉक आप सेल करना है बट डीपीओ हमारा भी 0 के ऊपर है. अगर 0 के ऊपर है और इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो अगेन यू कैन गिव इट अ 3 out of 5. आप सेल कर रहे हो कोई स्टॉक एंड यू फाइंड डीपीओ टू बी at above the 0 level and the direction is pointing down, so the direction is down, so you can just simply give it a 3 out of 5. So here in this current example, अब आप लोग बताओगे how much are you going to give the DPO for this particular trade? कितना दोगे आप DPO को? How much are you going to give DPO? How much are you going to give the DPO? 3 out of 5. Very good. Very good. 3 out of 5, right? 3 out of 5. Yes. Now, यहाँ पे DPO को कितना दोगे आप? At this particular level, how much are you going to give DPO? Yeah, Anirudh ne kaha 4. How many 4? How many 3? How many 5? 4, 4, 4, 4. Okay, everybody's 4. So yes, we will give it 4 because it is moving down and direction is also down. It's a 4. How much are you going to give over here at this candle? Jali se batao. How much are you going to give? Anirudh is saying 5. 5, 5, 5. Awesome. You guys understood, right? Very good. How much are you going to give here? Jaldi se batao. On the buying side, you are on the buy side. How much are you going to give it on the buy side? Buy कर रहे हो आप लोग at this candle, yeah. How much? 5, 5, 5. Very good. Why? Because it is crossing above the 0 level. So yes, that's a 5. All right, guys. That's a. ठीक है? That's a 5. All right. चलो. अब एक और चीज आते हैं. एक और जगह है जहाँ पे आप DPO में 4 out of 5 दोगे. And this also gives you a buying selling signal. All right. That also gives you a buying and selling signal, but not a very strong one. Okay, not a very strong one when compared to all other indicators. आप बता सकते हैं कोई इनमें से देख के कौन सा ऑप्पो होगा? किसने कहा मोस्टली स्टॉक 0 लाइन के नीचे होगा? अभी तो मार्केट इतना ऊपर मूव कर गया है, तो जो 0 लाइन के नीचे होगा उसको आप नंबर उस हिसाब से देना. बताओ कौन सा होगा इसमें ऑप्शन?
कोई बता सकता है कौन सा इसमें आपको बाइंग सेलिंग का सिग्नल और मिल सकता है? कम ऑन गाइस, आई एक्सपेक्ट एन आंसर। नहीं मतलब इसी डीपीओ में, नो नो नो, आई एम सेइंग डीपीओ में क्या कोई ऐसा और कुछ हो सकता है जहां पे मुझे बाइंग सेलिंग सिग्नल मिले डीपीओ से? कोई ऐसी एंट्री हो सकती है जहां पे मुझे बाइंग सिग्नल सेल सिग्नल मिले? Okay, Kunal has given the answer. Shivam has given the answer. Very good, Kunal and Shivam. Rajiv has given the answer. Very good. Omkar is saying crossing above 100. No, Omkar. Amanpreet has given the answer. Very good, Amanpreet. Great. Ashika is saying volume. No. Okay. So those who have said divergence and convergence, they are absolutely right. डीपीओ में भी आपको डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस मिलते हैं देखने के लिए, बट दे आर नॉट एज इंपॉर्टेंट and as strong as other indicators. But yes, you get an idea about what's going to happen in the stock, and you can see some downside कि stock हमारा नीचे की तरफ इस जीरो के लेवल तक आएगा कि नहीं आएगा. You get that idea from the DPO, from the diverse convergence in the DPO. If looking over here, yes, you can just see that from here, यहाँ से यहाँ तक, just look at this. The price has been moving up, right? From here, the price has been moving up, but our DPO has been moving down. So here you can get, you got a bullish, bearish candle after this divergence, and you can simply sell the stock. Okay, you can simply sell the stock. You are just playing with this. देखो, एक चीज याद रखो हमेशा, DPO is a swing trader, right? DPO is always swing trading. डीपीओ में इस वजह से हम लोग इसको इतना कंसिडर नहीं करते हैं, बाय बिकॉज स्विंग ट्रेडिंग हमेशा इस तरह खेली जाती है कि हम स्विंग लो पे बाय करते हैं और स्विंग हाई पे सेल करते हैं. दैट्स द होल पॉइंट ऑफ स्विंग ट्रेडिंग. ओके, बट इसमें अगर आप और दूसरे तरीके का इस्तेमाल करना चाहते हो, दूसरा खेल खेलना चाहते हो, तो आप इधर सेल भी कर सकते हो और इधर बाय भी कर सकते हो. बट दैट इज नॉट कन्वेंशनल स्विंग ट्रेडिंग, दैट इज नॉट कन्वेंशनल स्विंग ट्रेडिंग. बट डीपीओ में जब आप हाँ 200 EMA का यूज कर सकते हो, डेफिनेटली यू कैन यूज 200 EMA विद द डीपीओ. द व्हाट आई एम टेलिंग यू इज दैट कि जो कन्वेंशनल मेथड है स्विंग ट्रेड का, वो ये होता है कि आप लो पे बाय करो, हाई पे सेल करो, लो पे बाय करो, हाई पे सेल करो. लोग क्या करते हैं, अगर उनको ये फॉल मिल गया कि हाई से अब लो पे कितना करेक्शन गिरेगा, कितना आ सकता है, तो उस करेक्शन को भी वो ट्रेड कर सकते हैं. दे कैन ट्रेड द करेक्शन बाय यूजिंग द DPO this. Alright? Okay, DPO का ये यूज करके कर सकते हैं. So यहाँ पे जैसे देख लो आप, there has been a increase in the price but decrease in the DPO. You can simply expect the price to correct some point lower and then again move up. तो correction आ सकता है. We can expect some correction in the stock. Alright? So DPO का आप इस तरह यूज करके भी swing कर सकते हो. But that is not a conventional way of doing swing trading, because swing trading is always a game of buying at low and buy low like this, buy low and sell high. इस वजह से मैं इस स्टूडेंट्स को इतना ज्यादा एनकरेज नहीं करता हूँ कि डीपीओ को देख के आप स्विंग ट्रेड लो, सॉरी डीपीओ को डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस देख के ट्रेड लो अगेंस्ट द ट्रेंड. This trade will be against the trend. Okay, and sometimes trading against the trend is not a very good thing. Alright, so अगर मैं ट्रेंड मेरा ऊपर है और मैं इस करेक्शन को सेल कर रहा हूँ, if I'm selling at this correction, I'm trading this correction, so I am trading against my trend. So against the trend trade करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है when we trade along with the trend. For example, मैं यहाँ से करेक्शन पे बाय कर सकता हूँ and my stock will move up. Again I can buy at this correction, again my stock will move up. Okay, so try as much as you can be along with the trend rather than trading against it, because trading against में लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और आपके कॉल हिट होने के चांसेस कम होते हैं. whereas in the trend, अगर अच्छा ट्रेंड पकड़ा हुआ है आपने and there is a good swing available, so you will the profit making chances will be more than the selling at the correction. so ये चीज हमेशा ध्यान रखना. एंड डीपीओ में जो आपको ये डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस होता है, that helps you trade against the trend. यानी आपको अगर ट्रेंड के अगेंस्ट खेलना है at a certain correction like this, so that you can do with the DPO. if the DPO is making some divergence like this, कोई divergence बनाता है और या इस तरह का divergence बनाता है, तो you can
trade for some small downside, small correction. And अब यहाँ से क्या हो सकता है, स्टॉक चाहे 23.6, ये मैं आगे बताऊंगा, फिबोनाची 23.6 का रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जा सकता है, और इट माइट टेक अ रिट्रेसमेंट 38.2 लेवल। तो इस तरह से आप देख सकते हो, थोड़ा सा रिट्रेस होने के चांसेस होते हैं, करीब लेवल पे रिट्रेस हो सकता है, और नीचे के लेवल पे रिट्रेस हो सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल। दैट इज व्हाई ट्रेड along with the trend, you will be better in a swing trade अगेंस्ट खेलने की जगह। इंट्राडे में आप अगेंस्ट खेल सकते हो, कोई मसला नहीं है। इंट्राडे में आपने देखा स्टॉक ऊपर गया and you found a bullish engulfing pattern or harami pattern, you can simply trade that in intraday. Now intraday का कोई ऐसा इशू नहीं है, but if you are doing a swing trade, okay, swing trade में क्या होता है कि कभी भी अगर मान लो ट्रेंड है तो एनी टाइम सून एन अपवर्ड मूव माइट कम, या एक गैप अप आ सकता है, बड़ा गैप अप देख सकते हो आप स्टॉक में। मान लो स्टॉक थोड़ा नीचे गिरा एंड देन देयर वाज गैप अप, स्टॉक पर मूव हो गया नेक्स्ट डे, तो अच्छा खासा आपका लॉस में आ जाओगे आप। सो इस वजह से थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज का। अगर आप डीपीओ को ट्रेड कर रहे हो, so you can look at the divergence convergence also, and you can trade. मैं इसलिए इसको कोई पॉइंट नहीं दूंगा divergence convergence को, I'm not going to give any point over here because this is against my conventional way of trading the swing, ठीक है। तो इसलिए मैं divergence convergence को कोई पॉइंट नहीं दूंगा। लेकिन अगर आपको इंट्राडे में, if you are suppose you are trading and you get something like this, so आप अगर आपको डीपीओ मिल जाता है, एक अच्छे ट्रेंड में आपको डीपीओ में मिलता है करेक्शन कुछ इस तरह का, then you can trade that. Okay, so that's my ideology regarding the DPO. Which one is better, direction movement or DPO? There guys, directional index is your trend and direction indicator. DPO is your cycle indicator. So when we talk about these two, when we talk about which one is better, we have to see what all indications I am getting from that particular cycle, from that particular indicator. So if I'm using a swing trade, if I'm doing a swing trade, so for me looking at DPO is more important than looking at that particular ADX or at that particular DI, positive negative DI. So swing trade में आप लोग use करोगे तो you can use a moving average, you can even use DI, DPO होना जरूरी है along with the Fibonacci, and one momentum indicator is very important. कोई भी momentum indicator, चाहे money flow हो, चाहे RSI हो, चाहे CCI हो, एक money flow एक आपको मोमेंटम इंडिकेटर होना चाहिए साथ में। So a good swing strategy would be using a Fibonacci along with the DPO, along with moving averages, or you can say DI, okay, along with MFI, RSI, CCI, any momentum indicator to see okay, is it moving in that particular direction or not, or yes, volume is a must, volume तो आपको देखना पड़ेगा। okay, so अगर आप मान लो MFI, RSI, CCI का यूज नहीं करना चाहते, then there is one more indicator, check in money flow. This is again a very good indicator जो आपको बता सकता है। इट्स बेसिकली अ वॉल्यूम इंडिकेटर, लेकिन थोड़ा बहुत आपको मोमेंटम का भी आइडिया दे देता है। जैसे मैकडी आपको थोड़ा सा मोमेंटम का आइडिया देता है, बीइंग अ डायरेक्शनल बीइंग अ ट्रेंड इंडिकेटर, वैसे सीएमएफ भी जो होता है आपको थोड़ा आइडिया दे देता है मोमेंटम का, बीइंग अ वॉल्यूम इंडिकेटर, ठीक है। सो यू कैन यूज दैट। सो ये एक अच्छी स्विंग स्ट्रैटेजी होती है। फिबोनाची, डीपीओ, जब मैं आपको फिबोनाची पढ़ाऊंगा ना तो ये पूरी स्ट्रैटेजी आपको एक बार फिर से दिखाऊंगा, and you will see how it functions and how it works. Okay, am I clear till now guys? सबको clear है अभी? Am I clear guys? Am I clear? Yes. No Harshal, I'm saying कि देखो, अगर आप इंट्राडे भी कर रहे हो, if you are doing say intraday also, it's good कि आपने देखो क्या होता है, कभी कभार इंट्राडे में भी आपको पास ट्रेंड अवेलेबल होता है, राइट? You have trend available intraday also. Say 15 minutes का आप कैंडल देख रहे हो and you can see some movement like this. So you can expect कि okay चलो 15 मिनट के मूवमेंट में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में we are getting some swings, lows and swing highs, so we can trade that also using the DPO. मैं यूज कर सकता हूँ। I told you जहां पे भी swing अवेलेबल होगा you can trade that. So whether it be your इंट्राडे, whether it be daily time frame, इंट्राडे में ये स्विंग्स हमको कम मिलते हैं, मतलब ये जो ट्रेंड्स होते हैं ये हमको कम मिलते हैं। That is why we don't use separately this DPO in an intraday. We use separately this in your daily or weekly chart or a monthly chart to trade swing or positional. But yes, if it is giving you some idea, if you are getting a good trend,
Alright, if you have a trend available, then you can use DPO, or else you can just skip the DPO part and you can give the, आप उसमें थोड़ा सा चेंजेस भी कर सकते हो अपने हिसाब से, आप DPO हटा दो, आप एवरेज DPO का मत कंसिडर करो. ओके, बट यस अगर साइकिल आपको थोड़ा मिल रहा है, यू गेटिंग सम इंडिकेशन कि ओके साइकिल हमारी पॉजिटिव है नेगेटिव है, सो आप उसको DPO को जर्नल में डाल सकते हो. ओके, दैट इज व्हाई आई टेक DPO इन माय जर्नल, बिकॉज अगर मेरे पास इंट्राडे में ट्रेंड है अवेलेबल, सो DPO विल गिव मी अ बेटर entry and better trade levels and trade then without DPO. ठीक है, if there is a trend available over there. ठीक है, तो इस वजह से मैं DPO को कंसिडर कर लेता हूँ. और ऐसा नहीं, और अगर देखो इंट्राडे में बाकी सब कुछ अच्छा रहा ना, तो DPO आपको सिग्नल वही देगा जो बाकी सारे इंडिकेटर देंगे, सो यू कैन यूज दैट. ओके, एम आई क्लियर नाउ गाइस? DPO समझ में आ गया अच्छे से? सबको क्लियर है? साइकिल इंडिकेटर, व्हेन टू बाय, यस, एंट्री कब करनी है DPO के थ्रू? यस गाइस, क्लियर है DPO? चलो, वेरी गुड गाइस. So that completes our cycle indicator, and believe me, you don't need any other cycle indicator for your trading. एक cycle indicator काफी है, सारे के सारे लोग इसी indicator का use करते हैं. Now let's come to volume indicator. Okay, volume indicator. चलो, Somendu is saying perfect, very good Somendu. So अब हम लोग volume indicator शुरू करते हैं. और देखते हैं कि वॉल्यूम इंडिकेटर हमको क्या क्या इंडिकेशन दे रहा है. ओके guys, have I sent you a video regarding how to select stocks and how to put stop loss? मैंने आप लोग को भेजा है इस चीज पे वीडियो. आईसीमोकू नेक्स्ट सेशन में करण, नहीं भेजा? ऋतिक भेजा है ना सबको? आई हैव सेंट यू. ठीक है, सबको समझ में आया था इंटरडे में स्टॉक्स ऐसे सिलेक्ट करना है? चलो नो वरीज ना, मैं आपको लाइव भी बता दूंगा, उसकी फिक्र आप लोग मत करो. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट वॉल्यूम इंडिकेटर्स नाउ. वॉल्यूम में हमारे पास तीन इंडिकेटर हैं. वी हैव accumulation distribution, we have checking money flow, and we have volume itself. So एक एक करके हम इन इंडिकेटर्स को देखते हैं और हम सीखने की कोशिश करते हैं. ओके, यस अमनप्रीत, दिस वन इज माइन इन द सेंस कि इसमें थोड़े से मैंने चेंजेस करे, वो अभी आपको समझ में आ जाएंगे. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन से. हम लोग थोड़ा उल्टा चलेंगे, पहले एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, चेकिंग मनी फ्लो, फिर वॉल्यूम. ठीक है, आईसीमोकू फिर हमारे पास कुछ ज्यादा बचेगा नहीं. वी हैव आईसीमोकू लेफ्ट, वी हैव ये आईसीमोकू एक सेशन में, एंड रिस्क मैनेजमेंट हम लोग करेंगे हमारे लाइव सेशन में. लाइव सेशन मोस्ट ऑफली हमारा नेक्स्ट जुलाई फर्स्ट वीक और जुलाई लास्ट में हो जाएगा, सेकंड वीक ऑफ जुलाई हो जाएगा हमारा लाइव सेशन फिबोनाची, एंड आईसीमोकू विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट सेशन. ओके, बस एक सेशन और फ्राइडे का, एंड देन विल कंप्लीट द लेक्चर. ओके, सो गाइस सबसे पहले हम लोग जो बात कर रहे हैं एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की. ऑलराइट, so this is a volume based indicator and a very good one indeed. बहुत सारे लोग को आपने यूज करते हुए देखा होगा. और सबसे अच्छी बात इसकी होती है, इसमें हम लोग जो देखते हैं ना, वो हम देखते हैं हमारा इस इंडिकेटर में हम लोग देखते हैं हमारा डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस. ओके, वी लुक फॉर डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस इन दिस. सो पहले तो आप लोग को ये समझना है कि आप ये इंडिकेटर लगाओगे कैसे, फिर हम लोग इसको समझेंगे ये बना कैसे. सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, मैं एक कोड भेजूंगा. हैव आई सेंट यू अ कोड फॉर दिस इंडिकेटर गाइस? काइंडली टेल मी. नो नो, नॉट पिन कोड. देखो, अच्छा, तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू गिव यू दिस पर्टिकुलर कोड.
यहाँ पे आओ, ये देखो आप, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू गिव यू दिस कोड। ये कोड देख लो आप लोग, ये मैं आपको एक वर्ड फाइल में भेजूंगा आपके व्हाट्सएप पे, जस्ट नीड टू कॉपी इट। एक बार आप ये कोड कॉपी कर लोगे, ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू गो टू पाइन एडिटर। ओके, आपको पाइन एडिटर पे जाना है, ये बॉक्स क्लिक करोगे, ये मैक्सिमाइज हो जाएगा, एंड हियर यू हैव टू पेस्ट इट। ऑलराइट, तो फॉर एग्जांपल मैंने कॉपी कर लिया हुआ है, मैंने जो फाइल आपको भेजी आपको उसमें से कॉपी करना है, एंड देन यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन पेस्ट। आप पेस्ट करो, ऑलराइट, यू विल जस्ट पेस्ट इट ओवर। उसके बाद आप इसको सेव करोगे, ऑलराइट, सो यू आर गोइंग टू सेव इट। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सेव करके रखा हुआ है। ओके, सो यहाँ पे मैं सेव एज करूंगा तो इट विल गेट कि मैं किस तरह सेव करना चाहता हूँ, तो आई एम नॉट सेविंग इट अगेन, ऑलरेडी सेव करके रखा है। सो एक बार आप सेव कर दोगे तो ये आप यहाँ पे आपको इधर मिल जाएगा, ये माई स्क्रिप्ट। ओके, नो अपस्टॉक में पाइन एडिटर नहीं है, अपस्टॉक doesn't give you a pine editor. All right guys, look at this, so you have to go to my scripts, all right, Aichimoku, sorry, my strategy, यानी जो भी जैसे मैंने यहाँ पे देखी ना, मैं फिर से बताता हूँ, I'll just copy the thing from that particular, जहाँ पे मैं आपको फाइल भेजूंगा वहां से कॉपी करना है आपको। You have to go to pine editor, maximize and paste it. Once you paste it, you have to save with any name, the stock result indicator or whatever name you like accumulation distributions indicator, anything, whatever you want to name it, you can just simply name it. And then you just have to go to indicators and you have to go to my scripts. My script पे you have to click on the my strategy, जो भी आप सेव करोगे, and you will get this indicator over here. You will get this indicator over here. और guys, आपको इंडिकेटर मिल जाएगा। ओके, सो ये देखो आप लोग, just look at this indicator. This is your normal indicator, normal accumulation distribution indicator, which is flat at the moment. यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल पे फ्लैट है, राइट। जब ये स्टॉक मेरा HDFC बैंक हाई बना रहा था, this was flat. Okay, look at my accumulation distribution, this was falling down. Which one is giving you a better sell signal, my accumulation distribution or the original one, जो लोग actually जो यूज करते हैं? Mine one, right? मेरा accumulation distribution जो है आपको ज्यादा बेटर दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है डाइवर्जेंस, राइट? यस, एब्सोल्युटली। सो मेरा जो इंडिकेटर रहेगा, that is going to give you a more clear picture of the divergence and convergence than the simple accumulation distribution at important points. अच्छे जगह जहां से ऑलरेडी लोगों को लग रहा होगा चेंजेस आने वाले हैं, उस जगह से मेरा इंडिकेटर एक ज्यादा बेहतर आपको ट्रेड देगा when compared to the normal accumulation distribution indicator. So here you can see this again over here. Just look at this. So straight line, my accumulation distribution is falling, indicating that okay, fall might come again from this particular level, and यहाँ से आप stock को sell कर सकते हो. Alright, so यहाँ से stock sell कर सकते हो. So that's how you are going to get the indication of selling and buying through the accumulation distribution. You have to just simply look for a divergence and convergence. Okay, you have to look for a divergence and convergence, right? Yeah, ठीक है। सो अभी मैं आपको बताता हूँ रीजन एंड ऑल की मेरे इंडिकेटर में क्या है ऐसा जो मैंने यूज किया एंड ऑल दोस थिंग्स यू आर गेट टू नो। तो पहले देख लेते हैं हम लोग इसको अगेन। लुक एट दिस अगेन, stock is moving up, my indicator is moving down, and we've got a good upside. Okay,
So we'll simply sell the stock. We got a selling signal from here. यहाँ पे market peak हो रहा था. You were getting spinning top and dojis and then a good Marubozu. So that means you have to sell the stock from here. And from here you can see you saw tighten down to this particular level. Alright. So you already anticipate कर लिया था हम लोग ने move looking at this divergence in this particular indicator. That yeah, a divergence might come and we can just simply sell the stock. Okay. सो इस तरह से आप यूज करोगे इस accumulation distribution को divergence and convergence देखने के लिए. Alright? Yes, you can use this for intraday. It will definitely work out. Intraday में आपको अच्छे signals मिलेंगे इस particular indicator से. Okay, you will get signals in intraday. Just look at here. There's a divergence. You can sell the stock. Hanging man, bullish candle. You can simply sell the stock. Okay. So intraday में भी आपको signals मिलेंगे. You will get buying, selling signals on the basis of this. जहाँ पे भी divergence या convergence आपको मिलेगा, you are going to trade that. Okay? आपको उन जगहों पे trade करना. Say maybe a 30 minutes time frame. So what indication is Reliance giving you? Can you tell me? यहाँ पे इसको मत देखो. Don't look at accumulation distribution. Just look at the price action. What is it making? कोई बता सकता है मुझे? Very good. Reliance is making a descending triangle, a very good one indeed, and it has already broken out this particular. This is a very good, ascending triangle. So if I have to keep Reliance for trading, I will keep it for buying, particular buying. So sorry. Look at this breakout, the good volume. So we can definitely have a look at this and we can buy the stock at this opening. From here, the stock went up from around 1372 to 17550 to 20 points profit. Okay, by the end of the. So यहाँ पे एक अच्छा breakout दे चुका है. So we can expect a good upside in Reliance in the coming future. That is your Monday. Monday को Reliance एक अच्छा upside दे सकता है. Look at this breakout with a good volume, more than the previous volume. Previous 3-4 volumes से अच्छा volume breakout है. So simply just trade on this. So for us, this is a good signal for Reliance. अगर आपको Reliance को trade करना है, you can simply buy above this particular level. जैसे ही इसके ऊपर break करेगा, you can place a buy order for Reliance. Just look at this. Okay, you can place a buy. Alright, guys. Chalo. Anyway, let's continue after 15 minutes break. Basically 20 minutes. 20 minutes का break लेते हैं. फिर we'll continue with accumulation distribution का मैं और अच्छे से आपको बताऊंगा. Then we'll do the check-in and volume and we'll complete it. Okay? चलो guys. So half an hour break हम लोग तो 10 minutes का पहले ले चुके हैं. Let's take a 20 minutes break. अभी 7:15 हो रहा है. 7:25 पे start करते हैं. Okay? Alright guys. चलो. Take a break and come back in 20 minutes. Okay?
Okay, guys. So I hope everybody is back. No, okay. Samandu is saying how to select stock for swing trading and position trade. Samandu, I have sent a recording. Have you seen it, Samandu? Samandu, have you seen the recording? Guys, is everybody here? Because कोई जवाब नहीं दे रहा है. Okay, so सब लोग हैं अभी. चलो ठीक है. So let's continue. हाँ, let's continue. So as I told you, the basics of the market. यहाँ पे basic मैंने आपको बताया. Alright. I told you the basics, right? So divergence, convergence, both I'm gonna discuss in this particular thing. So guys, पहले एक बार इसके formula को देख लेते हैं. Let's understand the formula for this accumulation distribution and then we'll continue. Okay. So first thing here you can see what does accumulation distribution means. आप अगर नाम से ही समझो, okay, अगर आप नाम से समझो, तो यहाँ पे accumulation का मतलब होता है कि accumulate करना. ठीक है, यानी कोई चीज को accumulate करना. Alright? कोई चीज को accumulate करना. Alright? Distribute का मतलब क्या है कि कोई चीज को distribute करना. तो accumulate मतलब buying, distribute मतलब selling. Simple सी बात है, right? Accumulate मतलब buying, distribute मतलब selling. Very simple. यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं मनी फ्लो मल्टीप्लायर का. As I told you, देखो कोई भी अगर हम वॉल्यूम इंडिकेटर का अपसाइड ऊपर नीचे मूव करना है ना, तो मुझे मनी फ्लो मल्टीप्लायर निकालनी पड़ेगा. चाहे वो चाइकिन मनी फ्लो, चाहे वो MF5, चाहे वो accumulation distribution. Okay, alright. So ठीक है, 1 minute guys. ठीक है गाइस. सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लोज माइनस लो, हाई माइनस क्लोज डिवाइड बाय हाई माइनस लो. दिस इज अ फॉर्मूला फॉर दिस, यानी कि क्लोज माइनस लो, जैसे मैंने आपको पहले बताया मनी फ्लो मल्टीप्लाई में जब हम लोग डिस्कस किया था. ओके, सो क्लोज माइनस लो, यानी अगर मान लो हमारा कैंडल है तो क्लोज में से हम लो निकालेंगे
माइनस हाई माइनस क्लोज, ये हाई है, मान लो दिस हाई माइनस क्लोज अगर बेरिश कैंडल है तो, एंड डिवाइड बाय हाई माइनस लो, तो ये जो हाई होगा जो लो होगा उससे माइनस करेंगे, विल गेट द मनी फ्लो मल्टीप्लाई। ऑलराइट, उसके बाद इस मनी फ्लो मल्टीप्लाई को विल मल्टीप्लाई विद द पीरियड वॉल्यूम। अब यहाँ पे जरूरी क्या है कि हमको यहाँ पे उस पीरियड के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है। व्हाट वर वी डूइंग MFI, वी वर सिंपली जस्ट टेकिंग द द सेम थिंग, मनी फ्लो वॉल्यूम जो हम लोग ने मनी फ्लो में निकाला था, मनी फ्लो इंडिकेटर में, मनी फ्लो इंडेक्स में, उसका हम लोग ने यूज किया था उस पे स्पीड निकालने पे, जैसे हम RSI में यूज करते हैं, वही हम लोग ने फॉर्मूला यूज करके उसकी स्पीड या वेलोसिटी निकाली थी। That gave us the mass into velocity. But here what we are doing is we are just taking the previous ADL, all right, previous ADL, and we are adding it to current period's money flow volume, all right. So यहाँ पे ADL का मतलब क्या है? ADL का मतलब ये है कि हमारा जो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है हम वो लेते हैं। ADL means cumulative frequency of our money flow volume। इसका जो cumulative frequency, आप लोग को याद होगा, आप लोग ने statistics पढ़ा होगा, तो there is a cumulative frequency, okay, cumulative frequency आप लोग ने पढ़ा होगा, x होता है, fx होता है, ठीक है, then you have cfx यानी cumulative frequency of the fx। तो यहाँ पे आपको पता है fx है, मान लो 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, then say 20 है, इस तरह से अलग अलग fx है, तो what do? We just keep on adding it, 10, 30, then that will be 60, then 100, then 120, something like this. So this is a cumulative frequency। तो जब भी accumulate होता जाएगा तो यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव बढ़ता जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा तो यहाँ पे नीचे गिरता रहेगा। सो इस तरह से हम लोग ये एडी लाइन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एडी लाइन, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। इस CMF को हम लोग कहते हैं एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह चल रही है, 100, 120, 130, 140, क्योंकि fx हमारा यहाँ पे क्या है, मान लो से 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, उसके बाद यहाँ पे fx मेरा से 30 हो गया, फिर से 20 हो गया, से 10 हो गया, तो यहाँ पे 40 आया, देन 170 हुआ, फिर उसके बाद फिर ये जो है उस रेट कम हो गया यहाँ पे बढ़ने वाला, तो यहाँ पे 170, फिर 180, 190, 200, तो जिस रेट से यहाँ से इंक्रीज हो रहा था वो नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि पीपल आर नाउ सेलिंग द स्टॉक और नॉट बाइंग इन दोज लेवल्स, ठीक है। सो ये हमारा हो गया एडीएल लाइन। इसमें हम लोग ऐड करेंगे करंट पीरियड्स के मनी फ्लो वॉल्यूम को, दैट इज द करंट, ये वाला जो मनी फ्लो वॉल्यूम है इसको हम लोग ऐड करेंगे। सो वी विल गेट आवर एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। हम लोग ने इस पर्टिकुलर एडीएल के अंदर हम लोग ने यहाँ पे ऐड कर दिया हमारा मनी फ्लो का वॉल्यूम। सो वी गेट द एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैंने क्या किया, जस्ट लुक एट माय स्ट्रेटजी, व्हाट आई डिड, वेरी सिंपल, कोई बहुत ज्यादा ब्रेन या बहुत ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। इसमें हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने पहले जो हमारा एक सिंपल क्या कहते हैं मनी फ्लो का जो आपका फॉर्मूला होता है, मनी फ्लो मल्टीप्लायर, उसका मैंने सीधे सीधे जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लिया उस पर्टिकुलर मनी फ्लो की, और उसके बाद मैंने यहाँ पे उसको हमारे एडीए लाइन बना के ऐड कर दिया। तो जो भी हमारा यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, जस्ट लुक एट दिस, क्लोज माइनस हाई, क्लोज माइनस ओपन डिवाइड बाय हाई माइनस लो, ये हमारा ये मनी फ्लो हो गया। और यहाँ पे हमने इनटू वॉल्यूम, जितना भी वॉल्यूम है हम लोग ने मल्टीप्लाई कर दिया वॉल्यूम से, एंड आई जस्ट टुक आउट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मैंने डायरेक्टली ये एडी लाइन निकाली है ताकि ये एडी लाइन मुझको और स्मूथली और बेटर जो रिट्रेसमेंट से दे सके, ठीक है, रिट्रेसमेंट बोल रहा हूँ, डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस है वो दे सके। सो इनका जो एक्यूमुलेशन, जो नॉर्मल वाला एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, मैंने उसको सिर्फ स्मूथ किया है, नथिंग एल्स, ओके, मैंने उसको स्मूथ किया है। यानी मैंने इसमें से एक प्रोसेस यहाँ पे काट दिया कि यहाँ पे हम लोग को पहले एडीएल निकालना पड़ता था, उसमें करंट फ्लो वॉल्यूम को ऐड करना पड़ता था। अब मैं क्या करता हूँ, सीधे सीधे करंट फ्लो वॉल्यूम, जो हमारा करंट फ्लो वॉल्यूम आया, और उसी का मैं सीधे सीधे डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी ले रहा हूँ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ले रहा हूँ, ओके। सो आई गेट अ more smoother line and a more good divergence when compared to the normal accumulation distribution। तो आपको इस वाले accumulation distribution को ऐड करना है, and here what you have to do is you have to find divergences and convergence। आपको क्या फाइंड करना है? डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस। तो डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, अगर स्टॉक हमारा ऊपर जा रहा है, if the stock is going up but the indicator is going down, so आप वेट करोगे एक बेरिश सिग्नल का, and after that bearish signal you are going to sell the stock। और अगर हमारा स्टॉक ऊपर जा रहा है, इंडिकेटर नीचे जा रहा है, so that means that we are into a convergence and you will buy after a good bullish pattern, candle pattern, and the stock will
rise. So that is a simple accumulation distribution which you have to use. Apart from that, there are more certain, इसको थोड़ा सा ट्रेड का तरीका और भी है इसमें चीजों करने का, वो I'm going to tell you now. Okay, अभी आपको ये समझ में आएगा, accumulation distribution आपको समझ में आया. For example, look at this, look at the price movement over here and look at the divergence over here. So there was a clear-cut fall. From here, the stock went down and changed the trend. So market was moving up. This was moving up, but market was moving down. Sorry, our accumulation distribution line was moving down when it was moving up. So definitely it gave us a sell signal. Okay, be ready to sell the particular stock. Okay, that's your divergence. And let's look for a convergence. Just look over here. Here you're getting a convergence, right? यहाँ पे आप देखो स्टॉक हमारा नीचे जा रहा है, and here you're getting the indicator to move up. So from here the stock started moving up. देखो ये accumulation distribution हमको बताता है कि हमारे जो institutional investors हैं, वो कहाँ पर तैयार है बाइंग सेलिंग करने के लिए. At what level are they ready to buy and sell the stocks? तो हमारे जो institutions होते हैं वो हमारे लेवल बताते हैं कि किस लेवल पे हमारे institutions are ready to buy. For example, at this level, यहाँ पे जब ये यहाँ convergence has been, the institutions are interested in the buying side. अब वो अपना धीरे धीरे करके buying position बढ़ाते जा रहे हैं. That is why the stock is moving up, okay, or it's gonna move up in the future. So ये चीज हमें divergence और convergence बताता है. अगर हमारे पास convergence होता है, इसका divergence होता है, इसका मतलब क्या है कि हमारे जो institutions है, they are not very much enthusiastic to take the price up. यानी बहुत ज्यादा interested नहीं है price को ऊपर ले जाने में, and they have started selling. बहुत ज्यादा पोजीशंस नहीं, थोड़े थोड़े करके उन्होंने अपनी पोजीशन काटने शुरू कर दिए. सो दैट्स व्हाट योर दिस पर्टिकुलर कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस मींस. अब यहाँ पे क्योंकि वॉल्यूम का डायरेक्ट खेल है, यहाँ पे हम लोग सीधा वॉल्यूम ले रहे हैं, सो इट गिव्स अ बेटर इंडिकेशन वॉल्यूम के मुकाबले, बाकी सब के मुकाबले. क्योंकि बाकी सब में आप देखो तो हम लोग ने उसका वेलोसिटी निकाला, आरएसआई निकाला, मैकडी में हम लोग डायरेक्शन निकाला, ट्रेंड निकाला. इसमें हम लोग सिर्फ वॉल्यूम का मूवमेंट देख रहे हैं कि वॉल्यूम हमारा किस तरह से हमारे स्टॉक्स का मूव कर रहा है, यानी कितनी बाइंग हो रही है, कितनी सेलिंग हो रही है, वो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है. ठीक है, सो दिस गिव्स यू अ बेटर आइडिया अबाउट द current situation. For example, look at this divergence. Just look at this. You have got an upside, but यहाँ पे हमारा जो institutions है, they are not interested. Even after a gap up, the institutions are not interested in taking the stock up. So this is a clear divergence over here. So now what do we have to do? We have to sell it. So here you can see you have got a good upside, a good upside move, and a big bullish bearish candle formation. And after that there was spinning top, and then the stock started moving down. So we have got a good sell signal की, ठीक है, हम लोग यहाँ से स्टॉक को सेल कर सकते हैं looking at this particular divergence. और ये आप देखो 3 आवर चार्ट है, आप शॉर्ट ट्रेडिंग कर सकते हो, स्विंग ट्रेड कर सकते हो, जो भी आप करना चाहो उस पे आप कर सकते हो. ऑलराइट, सो ये चीजें आप लोग को थोड़ा सा अच्छे से हेल्प करेगी. ये इंडिकेटर आपको हेल्प करेगा अच्छे एंट्रीज लेने के लिए व्हेन देयर इज अ वॉल्यूम में आपको डाइवर्जेंस जब देखने. ठीक है, सो दिस ये और चेक इन मनी फ्लो, दैट्स अनदर गुड वॉल्यूम इंडिकेटर वी आर गोना टॉक अबाउट लेटर. ओके, ऑलराइट गाइस, तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो there's a convergence, the stock is falling down quite considerably, but उतने तेजी से वॉल्यूम नहीं गिर रहा है, वॉल्यूम इज फ्लैट. ओके, अगर आप देखो वॉल्यूम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं आपको दिख रहा है. ठीक है, सो दिस मींस व्हाट, दैट देयर अ बाइंग माइट कम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस. एक अच्छी बाइंग आ सकती है इस पॉइंट ऑफ टाइम से. ओके, यहाँ से एक अच्छी बाइंग आ सकती है. एंड यू कैन सी दिस, देयर वाज अ बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न. दिस गिव अस आवर बाइंग सिग्नल, अ गुड बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न आफ्टर अ फॉल. So from here the stock went up. So आपको इस तरह से buying and selling signals provide होंगे, and you just simply need to trade them. Alright, buying signals आपको मिलेंगे इसमें, and you have to trade them. So am I clear with the divergence and convergence, guys? इसमें divergence and convergence clear है आपको? Guys, am I clear with the divergence and convergence? Again, look at here. Okay, clear है? चलो, very good. See, ये तो हो गया एक बाइंग सिग्नल. अब दूसरा बाइंग सेलिंग सिग्नल आपको कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ.
So first thing is that this gives you a good support resistance of volume. वॉल्यूम का अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस देता है. आप इसको इधर देखना ध्यान से. What I mean to say is, taking up the pen, just look over here. This is a accumulation distribution indicator, and it has been moving like this, fall, move like this. Okay, so now listen to this very carefully, guys. यहाँ पे you can see there was a V formation. Okay, यहाँ से एक चेंज आया, नीचे गिर रहा था, यहाँ से ऊपर मूव आया. जहां जहां आपको इस तरह का वी फॉर्मेशन मिलेगा, जहां से स्टॉक में मूवमेंट ऊपर की तरफ आया है, दैट इज गोइंग टू एक्ट एज योर योर सपोर्ट वॉल्यूम का. ओके, तो फॉर एग्जांपल look at this. This will give you a support. This will give you a support like this. So स्टॉक जो है हमारा ऐसे फॉल करेगा इस समय, and from here stock will move on. Okay, मैं एक लाइन बना लेता हूँ पहले. ड्रॉ लाइन वो है. ओके, अब यहाँ से स्टॉक गिरेगा, इट माइट टेक अ सपोर्ट एंड मूव अप. सो हम लोग भी स्टॉक को बाय कर सकते हैं ऐसी जगह. ठीक है, जहाँ पे इसका वॉल्यूम का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ वॉल्यूम निकल रहा है. अगर और नीचे गिरा तो नेक्स्ट जो नीचे आएगा, सो सपोज से हियर, ये यहाँ पे भी एक भी है. सो लेट मी ड्रॉ अ लाइन ओवर हियर आल्सो. ओके, सो यहाँ फिर आया नीचे, इट विल गेट अ सपोर्ट. सो जहां पे भी इस तरह का फॉर्मेशन आपको मिलेगा नीचे की तरफ, वहां पे स्टॉक को आपको सपोर्ट देगा. ठीक है, सो दिस इज अ सपोर्ट थिंग. नाउ लेट्स कम टू द रेजिस्टेंस थिंग. सपोज दिस इज योर इंडिकेटर. ओके, सो स्टॉक कुछ इस तरह से मूव कर रहा है और स्टॉक कुछ यहाँ पे है. ऑलराइट, सो सबसे पहले आपको देखना है कुछ इस तरह का मूवमेंट आया है, दैट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस. ओके, सो लेट मी ड्रॉ अ स्केल. सो फर्स्ट यू हैव गॉट इट हियर. यहाँ पे भी आप देखो तो मूव आया है इस तरह से. ये हो गया. ठीक है, सो दीज विल बी गिविंग यू सर्टेन रेजिस्टेंस. सो यहाँ पे जाएगा, मे बी ऊपर गया, इट माइट टेक अ रेजिस्टेंस. ओके, इट माइट टेक अ रेजिस्टेंस एंड कम डाउन. तो हम इस रेजिस्टेंस पे सेल कर सकते हैं. और अगर ऊपर गया तो इसको ब्रेक करा तो ये एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, स्टॉक माइट कम डाउन. या और ऊपर इस लेवल तक गया तो रेजिस्टेंस मिल सकता है नीचे से. ओके, तो जहां पे भी आपको इस तरह का फॉर्मेशन मिलेगा करंट वॉल्यूम के ऊपर, दैट इज गोइंग टू गिव यू रेजिस्टेंस इन द स्टॉक. ठीक है, अब इसको हम लोग जल्दी से देखते हैं हमारे स्टॉक में, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर इंडिकेटर. सो यहाँ पे देखो, ये करंट प्राइस है. पहला जो इस तरह का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है. सो ऑल दीज आर योर तो मैं एक लाइन अगर मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, जस्ट लुक एट दिस वन लाइन आई हैव ड्रॉन ओवर हियर. सो यहाँ पे आप देखो फ्लैट है, राइट, रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस देखो आप, यहाँ पहला प्रीवियस रेजिस्टेंस था, देखो जैसे मैंने बताया. अभी मान लो स्टॉक यहाँ नीचे है, तो आपने देखा, आपने बना दिया, आगे गया स्टॉक, फिर वापस से ऊपर मूव करता, अगेन टुक द रिट्रेसमेंट, अगेन टुक द took the resistance at this level. So can I sell at this particular point? Yes or no, guys? Can I sell the stock at this particular point? Yes or no? Guys, can I sell the stock at this particular point of time? Yes or no? Yes, definitely.
yes, we can sell the stock at this particular point of time, and you can see that we got some good downside from this particular level. 3 दिन से गिरते जा रहा है stock. Why? Because it has taken this particular retrace. Alright, sorry, resistance. तो देखा आप लोग ने, resistance बना था यहाँ पे, इस जगह ही बना था ना, लेकिन आगे स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया है. सो वी कैन सिंपली सेल द स्टॉक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. ऑलराइट, हम लोग इसको सेल कर सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह से अब जैसे करंट लेवल ये, तो सबसे पहला एक रेजिस्टेंस इसको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे एक इस तरह का मूवमेंट है, देखो यहाँ पे. सो इफ आई ड्रॉ इट लिटिल बोर्ड, तो यहाँ पे सपोर्ट कहाँ मिलेगा? सपोर्ट इसको इन जगह पे मिलेगा, ये देखो यहाँ पे स्टॉक इज मूव लाइक दिस, ये इस तरह से. सो आई विल गेट अ सपोर्ट एट दिस लेवल. ओके, एट दिस लेवल आई गेट अ सपोर्ट. और आपको पता ही है, प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, दैट इज अ न्यू सपोर्ट. आई टोल्ड यू अबाउट दैट, राइट? ठीक है गाइस, इस तरह से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस में ड्रॉ कर सकते हो. सो इवन अगर ये फॉल कर रहा है, नेक्स्ट डे अगर सपोज फॉल करता है, सो यू कैन एक्सपेक्ट द प्राइस टू मूव डाउन टू दिस पर्टिकुलर सपोर्ट. अगर ये हमारा जो ये इंडिकेटर है वो नीचे की तरफ यहाँ तक जा सकता है, एंड टेक अ सपोर्ट. वॉल्यूम माइट टेक अ सपोर्ट. ऑलराइट, वॉल्यूम माइट टेक अ सपोर्ट एट दिस लेवल एंड देन मूव आउट. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का यूज कर सकते हैं टू फाइंड द movement in stock, find a resistance support to the volume, and we can simply trade that. Okay, resistance रहेगा तो हम resistance को sell करेंगे, support रहेगा तो support पे we will buy the stock. For example, look at this, अभी बनाया ना मैंने, देखो पहले यहाँ पे resistance था, यहाँ पे there was a resistance at this particular level. आगे देखो resistance को definitely stock ने test कराया, देखो आपने आगे जाके इस resistance को test कराया stock ने, right? So इस तरह से आपको resistance और supports मिल सकते हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर. ओके, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के. ठीक है, और इट गाइस, सो अभी देखो करंट रेजिस्टेंस अगर मैं इसको देखूं, तो ये रेजिस्टेंस ये तोड़ चुका है, ये एक रेजिस्टेंस था. व्हाई? बिकॉज यहाँ से स्टॉक नीचे आया. नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज एट दिस लेवल, ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पे वॉल्यूम इसको प्रोवाइड करेगा. अगर ये इस रेजिस्टेंस को ले भी रहा है रेजिस्टेंस, अगर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है, तो फिर ये इस वॉल्यूम तक रिलायंस ऊपर की तरफ जाएगा, जो कि करीब यहाँ पे आपको मिलेगा. ओके, एट दिस पर्टिकुलर लेवल. सो इफ नेक्स्ट डे एक अच्छा बुलिश कैंडल खुलता है, सो यू कैन बाय इट टिल 1772 के लेवल तक आता है. ठीक है गाइस, अभी ये चीज क्लियर हो गया आपको? बाइंग सेलिंग के सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे समझ में आ गया आपको? रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा बाय, सपोर्ट ब्रेक करेगा सेल. ठीक है, क्लियर है? सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना accumulation distribution line पे guys. Got it? Very good, extremely happy. So now suppose if I want to give it points, तो मैं points कैसे दूंगा? It's very simple, it's very simple. कैसे आपको देना है? यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर लेवल तो है नहीं, 0 है या 100 है, कुछ ऐसा लेवल नहीं है. यहाँ it's on the direction base पे है. डायरेक्शन फर्स्ट इज 5 out of 5, वेरी सिंपल. जब अगर आपको डाइवर्जेंस मिलता है, you are going to give it a 5 out of 5. Alright. Second is 4 out of 5. 4 out of 5 आपको तब मिलेगा दो कंडीशंस पे. देखो ये जो आपको मैंने सिग्नल बताया ना, ये वॉल्यूम का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल व्हेन कंपेयर्ड टू द डाइवर्जेंस. द डाइवर्जेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. ओके, बट स्टिल इट इज गिविंग यू अ बाय सेल सिग्नल. ठीक है, तो हम इसको 4 out of 5 दे सकते हैं. अगर क्रॉसओवर आता है तो मैं इसको 4 out of 5 दे सकता हूँ. सेकेंड इज, अगर इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इफ द डायरेक्शन ऑफ दिस इज अप, ऊपर की तरफ जा रहा है डायरेक्शन इसका, सो मैं इसको 4 out of 5 दूंगा. अगर इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, मे बी इट बी एनी लेवल, कोई भी लेवल पे, लेकिन इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो मैं इसको 3 out of 5. मैं अभी यहाँ पे बात कर रहा हूँ बाय साइड. सेल साइड में अगर डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो 4 out of 5, डाइवर्जेंस है 5 out of 5, डायरेक्शन नीचे की तरफ 4 out of 5, कोई प्रीवियस सपोर्ट ब्रेक किया तो 4 out of 5, सिंपल. और अगर मान लो डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, मैं स्टॉक सेल कर रहा हूँ, बट मेरा जो ये है ये ऊपर की तरफ है, सो आई एम गोइंग टू गिव इट यू नो
आई एम गोइंग टू गिव इट दिस 3 out of 5 अगर मेरा ये ऊपर, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी मैं 4 दूंगा, बिकॉज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉल नहीं है मेरे हिसाब से। इट्स अ टेकेबल कॉल बट नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉल। जितना मैंने इसको हिस्टोरिकली यूज किया है, द सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन, सो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं है ये when compared to the actual support resistance breakdown or breakout। लेकिन हाँ, अगर मान लो कोई सपोर्ट ब्रेकडाउन हो रहा है एंड अगर यहाँ पे भी कोई सपोर्ट इसके साथ साथ ब्रेकडाउन होता है, देन वो एक अच्छा सिग्नल हो जाएगा, क्योंकि हमारा वॉल्यूम का सपोर्ट भी ब्रेक हो रहा है और हमारा एक्चुअल सपोर्ट भी ब्रेक हो रहा है। सो दैट विल बी अ गुड इंट्राडे सिग्नल, यू कैन ट्रेड दैट। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे भी तोड़ा इसने एंड इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे भी तोड़ा इसने, सो दिस इज अ गुड बाय कॉल। बाय, बिकॉज यहाँ पे भी इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, यहाँ पे भी इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। सो दिस इज एक्चुअली अ गुड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम से ब्रेकआउट हुआ है प्रीवियस वॉल्यूम्स का। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे नहीं पता चलती, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चल जाती। ओके, इस एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में, एंड दिस इज अ वेरी गुड इंट्राडे इंडिकेटर। ओके, ऑलराइट गाइस, अगर आपको लग रहा है कि आपको, अगर आप ट्रेड करते हो इसको एंड यू थिंक दैट ओके सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे मे बी मैं इसको ज्यादा सपोर्ट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को इतना ज्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ, डाइवर्जेंस मिलता है मैं उसी को ट्रेड करता हूँ, वरना मैं बाकी चाइकिन मनी फ्लो एंड ऑल यूज करता हूँ। तो अगर आपको मान लो इसी एक्यूमुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन में लग रहा है सपोर्ट ब्रेकआउट डाउन, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल फॉर यू, तो यू कैन गिव इट अ 5 आउट ऑफ, बिकॉज यू आर गेटिंग अ बाय सिग्नल एनीवे इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड। ठीक है, लेकिन मैं 4 आउट ऑफ 5 देता हूँ इसको। आपको अगर आप ट्रेड करोगे, इसको प्रैक्टिस करोगे, देखोगे एंड यू आर फाइंडिंग दैट ओके माय ट्रेड्स आर गेटिंग गोइंग गुड व्हेन इट द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज ब्रेकिंग आउट ब्रेकिंग डाउन, सो आप उसको 5 आउट ऑफ, इस हिसाब से जब जर्नल बनाओगे यू कैन गिव इट। ओके, सो एम आई क्लियर विद दिस accumulation distribution गाइस? accumulation distribution क्लियर है? यस, यस, वेरी गुड। चलो, so let's move on to our next indicator, that is the Chaikin money flow indicator। okay, so ये कौन सा, ये अलग, ये हमारा एक अच्छा वॉल्यूम इंडिकेटर है, ऑलराइट, जिसमें सब कुछ आपको सेम मिलेगा, द सेम मनी फ्लो मल्टीप्लायर, द सेम मनी फ्लो वॉल्यूम, वॉल्यूम से मल्टीप्लिकेशन टू गेट द मनी फ्लो वॉल्यूम, एंड देन हियर वी टेक you know we take the division of 20 period sum of money flow volume and 20 period sum of volume, and we get our Chaikin money। all right guys, just give me 1 minute, एक सेकंड, ये लाइन यहीं पे रहिएगा आप लोग। आप लोग रात में, अगर आप लोग को ट्रेड करना है ना, सपोज आप लोग को रात में कोई ट्रेड लेना है, प्रैक्टिस करना है, तो देखो आप, मार्केट चालू हो जाता है 7 बजे यहाँ पे, यूएस मार्केट, ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके ट्रेड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सपोर्ट ब्रेकआउट, और ये आप देखो, ये प्रीवियस एक सपोर्ट था इस इंडिकेशन पे, and it has broken out this particular support in the accumulation distribution, and from here you can see that we have got good downside till this level 355 तक एप्पल गिरा है। okay, so $2 $3 easily you would have made। या देखो जैसे ये ऊपर की तरफ गया हमारा, ये ब्रेकआउट है, इट्स गुड अपसाइड मूवमेंट। या अगर आप accumulation, आप अगर इसमें कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस आपको मिले, you can trade that। so you have Amazon, you have Apple, you have many other indicators to trade। okay, well, many more stocks to trade। okay, so convergence divergence सब में आपको मिलेगा। so for example look at this divergence over here, look at this, ये हमारे स्टॉक डबल एक तरह से, और look at the indicator is going down and down, and we can see a good downside week in this particular stock। so ये Amazon है। okay,
पेपर ट्रेड मैंने आपको बताया था इस पे आपको कैसे करना है। यू जस्ट, अगर मुझे मान लो, देखो, दिस इज अ सपोर्ट लेवल फॉर Amazon राइट नाउ इन अ 15 minutes candle, okay, and this over here is a support level for this indicator accumulation distribution, all right, this over here. अब देखो ये सपोर्ट का ब्रेकआउट करा है इसने, all right, but our indicator is not broken out below this level, okay, हमारा इंडिकेटर ने अभी ब्रेक नहीं किया इस लेवल के नीचे. So this might be false breakout and the stock might move up again because हमारे जो इंडिकेटर है उसने भी ब्रेकआउट नहीं दिया है ये वाले सपोर्ट लेवल्स, इवन दो ये सपोर्ट तोड़ चुका है स्टॉक यहाँ पे, बट इस जगह नहीं दिया है. Alright, so this means that the stock is taking this particular support right now. देखो आप, ये वाला सपोर्ट मिल रहा है, 1 2 3, देखो कितने पॉइंट्स टच हो रहे हैं यहाँ पे, देखो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे वर्क कर रहा है, 1 2 3 पॉइंट यहाँ पे, 4 पॉइंट यहाँ पे टच कर रहा है. दैट इज व्हाई देयर इज अ पर्टिकुलर सपोर्ट हियर आल्सो. द स्टॉक हैज नॉट ब्रोकन इट राइट नाउ. इसको भी तोड़ के जा सकता था बट इसको नहीं तोड़ा है अभी. The stock might take a support and move up. तो अगर एक bullish candle बनता है Amazon में, say like in 6 minutes 7 minutes एक bullish candle बनता है, okay, next candle अगर bullish बनता है, say आप bullish हरामी pattern और engulfing pattern, so आप trade कर सकते हो. like आपको अगर buy करना है, suppose you need to buy Amazon, so आप buy पे जाओगे and मैं trading panel पे जाके अपने broker को पहले activate कर लेता हूँ. Let's connect to the broker. paper trading पे click करोगे आप. ओके, ट्रेडिंग व्यू का हैक कैसे करने का है. डू यू हैव क्रेडिट कार्ड? किसके पास क्रेडिट कार्ड है आपके पास? Amanpreet, do you have a credit card? Okay, so what you are gonna do is, Amanpreet, मैं अभी आपको हैक बता देता हूँ. पहले मैं एक्चुअली फुल वर्जन ही यूज कर रहा हूँ, मैं हैक यूज नहीं कर रहा हूँ, बट आप लोगों को मैं हैक बता देता हूँ. आपको करना क्या है, you just need to sign in. When you'll sign in, na, you will be asked for a free trial. All right, you will be asked for a free trial, and here you will get certain plans. You'll get a basic, pro plus, premium. All right, all right. So now you have to select try free for 30 days. Okay, so I'll click on it. It will ask you to sign in. आपको sign in करने के लिए बोलेगा ही. So you just need to sign in through your whatever email ID और जो भी आप यूज करते हो. Alright, so एक बार आप साइन इन कर लोगे, ओके, आप एक बार साइन इन कर लोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप ट्रायल वर्जन, आप क्रेडिट कार्ड यूज होगा, 70 रुपीज अराउंड उसमें आपको कटेंगे, बिकॉज वो टेस्ट करते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड वैलिड है कि नहीं. सो उसके बाद जैसे अब आपको क्या करना है, उसके बाद व्हाट डू यू नीड टू डू इज नेक्स्ट इज, सबसे पहला काम, यू हैव टू क्रिएट सर्टेन लेआउट्स एंड यू हैव टू सेव देम. फॉर एग्जांपल, लुक एट हियर, दिस इज अ 4 विंडो लेआउट. What I'll do is, I'll just go here, I'll make a copy and I'll just rename it. Yeah, I will do one thing, I'll just simply go to load chart layout, sorry, new chart layout, one second. New chart layout, कौन सा खोला है? Why I'm not able to open one? पहले ये लोग फ्री वर्जन में खोल लेते चार्ट लेआउट, लेकिन अब इन्होंने खोलना छोड़ दिया है. एनीवे, जब आप ट्रायल वर्जन लोगे ना कंप्लीट, तो यू विल बी एबल टू ओपन इट. ओके, जब आप फुल वर्जन वाला $59 वाला डॉलर वाला आप ट्रायल लोगे ना, यू विल बी एबल टू ओपन अ न्यू चार्ट लेआउट. तो जब न्यू चार्ट लेआउट पे क्लिक करोगे, and then you are going to do is, you are going to just simply
One second. Okay, you are just simply going to open different splits and you are going to save it. So I'll just save it, say 4 windows. Okay, so with 4 layout, yeah, 4 layout, whatever you name, you want to keep the name, you can save it. Okay, now you will open another one. All right, you will be able to open another one. All right, for example, say I'll open this US oil. ये मैंने save कर रखा था already. So let's suppose if I open this one, okay, and then I can simply open a 2 split window in this and I can save it. Okay, I'll just rename it and I will save it. I'll just rename it. Okay, that 2 layouts. Okay, so इस तरह से मैं पहले तो आपको चार्ट लेआउट सेव करने द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज यू हैव टू सेव द चार्ट लेआउट. सो मान लो एक, फिर आप 3 वाले में करोगे, आप 3 सेव करोगे. So 2, 3 and 4, that's the whole you need. Okay, one thing. Second thing is that you need to add certain, for example, मैं अभी एक लेआउट पे जाता हूँ. अब सपोज आप क्या होता है, देखो फुल वर्जन में what you can do is you can add as many indicators as you want, okay, in full version. In free version you can only add 3 indicators. So for example, if I am setting a upper trend indicator, so I will add moving averages. Okay, say exponential में add 2-3 exponential add करूंगा. I'll add 2-3 moving average exponentials. Okay, मैं 2 add करे, then I'll add the EMA, मैं exponential मैं directional movement add करूंगा, and then I'll be adding MACD, मैं MACD add करूंगा. ठीक है, और यहाँ पे जो moving averages आप डालोगे ना, तो वहाँ पे 5-6 moving average डाल लेना. ठीक है, exponential move like 50 moving average, 20 move or 200 moving average, ये सब डाल के रखना है. तो क्या है कि golden crossover ये सब आपको पता चल जाएगा. ठीक है, so you can add 3, 4, 4, 5 moving averages, you can add DMI, you can add MACD, and then you will save it. You are just gonna save it as, you know, trend indicator. All right, let's save it as trend indicator. Again, now you will open a new chart layout. Okay, remember this, you'll open a new chart layout and you are gonna remove all these indicators. What you're gonna do is you will add, you know, momentum indicators. For example, RSI, MF, money flow, okay, CCI. All right, along with MACD and all. तो एक आपको जनरल एक अच्छा आइडिया मिल जाता है. MACD बोल रहा हूँ, मूविंग एवरेजेस का एक थोड़ा अच्छा आइडिया मिल जाता है. एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. So you can add 2-3 MACD or 2-3 exponential averages over here, ताकि अगर आपको गोल्डन क्रॉसओवर वगैरह मिलता है तो you can even trade that. तो एक मोमेंटम इंडिकेटर, and you are gonna save this one as, you know, you're gonna save this as momentum indicator. Momentum. Similarly, then you will go to the Ichimoku and all. Ichimoku सेव करोगे आप, all those things. इस तरह से you are going to, जो भी मैं आपको इंडिकेटर्स अभी पढ़ाऊंगा ना, you just need to create trend, momentum, Ichimoku, volume यानी mass, and all those things, or layouts, and you are just simply gonna save it. जब आप सेव कर लोगे ना, then you have to just go over here on your account, in your account. Okay, accounts and billing में you are gonna go to the accounts and billing. Okay, accounts and billing. Alright, और accounts and billing में जाने के बाद, यहाँ पे accounts and billing में जाने के बाद, यहाँ पे you have to cancel, और यहाँ पे delete payment method, आपको अपना payment method delete करना है. अगर आप ये नहीं करोगे, you are going to get, you will be charged, okay, for that particular जो भी प्रीमियम का जो $59 का होगा, that is around $400-500 आपको चार्ज किया जाएगा. So 30 days खत्म होने से पहले you have to, you know, delete your payment methods. Once your payment method is deleted, then you will, all your chart layouts and everything will get saved over here. जैसे मैंने यहाँ पे सेव कर रखे, बहुत सारे चार्ट लेआउट सेव कर रखे. ये सब मैंने पुराने फ्री ट्रायल में जब मैंने लिया था तब मैंने सेव करे थे. So you can anytime, for suppose I want to use the fold layout, I'll click on it and I will get this fold layout. Okay, I will get this fold layout. Even my trial is over, I have like free version, still I will be able to use this for layout. ठीक है, इस तरह से आपको different जो patterns है, layouts हैं, वो सेव करके आपको रखने हैं. Am I clear with this? क्या अभी समझ में आ गया आपको हैक कैसा है इसका?
गाइस समझ में आ गया इसका हैक कैसा है? देखो गाइस, अब आपको एक चीज मैं बता देता हूँ। फॉर दिस ना, फॉर दिस अगर आपके पास सबस्टॉक है, तो ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू जस्ट ओपन, जस्ट गो एंड टेक द ट्रायल एंड क्रिएट सर्टेन लेआउट्स, बस। बाकी जितने इंडिकेटर्स आप यूज करना चाहते हो ना, अपस्टॉक ऑलरेडी आपको दे रहा है। यू कैन save as many indicators as want, you can use as many indicators as you want in that. Okay, हाँ, रियल टाइम दिखाएगा। ओके, इफ द ट्रायल इज ओवर यू विल गेट रियल टाइम इंडिकेशंस। ओके, क्लियर है सबको? यस और नो? wanted to learn about the bad pattern? देखो मैंने कहा ना, जो मेरा एडवांस कोर्स होगा उसमें that is a harmonic pattern. Bad pattern is a harmonic pattern which is based on Fibonacci. तो जो मेरा एडवांस कोर्स होगा, हार्मोनिक पैटर्न्स उसमें मैं कवर करूंगा। ओके, नॉट इन दिस। हाँ, अपस्टॉक पर ये लेआउट नहीं मिलेगा आपको। Like upstock where you can go and you can use as many indicators you want on upstock, but you won't be getting this chart layout, and this is very important thing कि चार विंडो आपको इजीली जब अवेलेबल हो सकती है तो इतना प्रॉब्लम क्यों लेना है? आप फ्री ट्रायल लो, 4 विंडो बनाओ, 5 विंडो बनाओ, 6 विंडो बनाओ, अलग अलग सेव कर लो, जस्ट सेव देम। ओके, यू कैन सिंपली जस्ट सेव देम। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे से रिलायंस है। You can simply just do what you can, पहले मैं एक बड़ा खोल लेता हूँ इसको। I'll open this in full window and यहाँ पे आप इसको जितने इंडिकेटर्स आप डालना चाहते हो, से 50 100 जितने भी, यहाँ देखो कितने इंडिकेटर्स आपके एक साथ आ गए, जितने इंडिकेटर आप डालना चाहते हो डाल सकते हो। एंड यू कैन जस्ट सिंपली, अगर मान लो आपको ट्रेंड, सिर्फ ट्रेंड यूज करना है, यू कैन सिंपली सेव ट्रेंड लेआउट। ठीक है, तो सेव हो गया। फिर आपको और, तो अब यहाँ पे लोड चार्ट में जाओगे, सो यू विल गेट different indicators. For example, this is trend. So मैंने trend के नाम से सेव कर रखा है, so I can simply use this as a trend indicator. So इस तरह से आप layouts बना सकते हैं, can save the indicators and they will be available to you for lifetime because इनका यहाँ पे set है। तो अभी अब जो full version का था वो already Upstock आपको provide कर रहा है, so there is no need for full version और कई hack की, बस except for this, ये layout आपको नहीं मिलता है। This layout is very important. Okay, ये layout आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ओके, यहाँ पे लेआउट का ऑप्शन नहीं है। Okay guys, am I clear with this? Guys, am I clear with this? हाँ, तो इसमें भी पर्टिकुलर स्टॉक का ही सेव होगा, देन यू कैन चेंज द स्टॉक। इसमें भी आप जब सेव करोगे ना, तो आपका वही पर्टिकुलर स्टॉक ही सेव होगा। आप इसको जो भी पर्टिकुलर आप स्टॉक के सेव करोगे उसी से सेव होगा। अगर मैं रिलायंस सेव कर दूं यहाँ पे, तो सिर्फ रिलायंस के नाम से ही सेव होगा। ओके, alright guys, am I clear with this? Just look at Apple, ब्रेकआउट करा था इसके नीचे विद गुड वॉल्यूम। यहाँ पे देखो अक्यूमुलेशन तो कितना अच्छा नीचे हमें डाउन साइड मिला है। अब यही एप्पल में ट्रेड करना चाहता ना, तो मैं ट्रेड कर सकता था इस एप्पल। ओके, ओके, यहाँ पे देखो, जस्ट लुक एट दिस, कितना अच्छा ब्रेकआउट मिला हमको। फेक ब्रेकआउट नहीं रहा हमारा। व्हाई? बिकॉज ऑफ द दिस accumulation distribution crossing below the previous support. Okay, अभी मैं forex मार्केट बताता हूँ guys, just give me 4 minutes, I'll just come from the loo and I'll continue. Okay, just 4-5 minutes and I'll come back. Okay.
Okay, guys. So sorry for keeping you waiting. Let's continue, huh, guys? See, अभी किसी ने मुझसे पूछा सर क्या कहते हैं should we you know trade that particular thing? Okay, forex कैसे trade करते हैं? Is everybody here, guys? Yes. Okay. So अनिरुद्ध आस्ते सर forex ऐसे trade करते हैं. आप अपने अपस्टॉक से कर सकते हो forex में trade, but there are certain limitations. You can only trade a pair with INR. Okay. INR के साथ पेयर कर सकते हो, जैसे USD INR कर सकते हो, जापानीज येन INR कर सकते हो, यूरो INR कर सकते हो, यूरो USD कर सकते हो, USD यूरो कर सकते हो, और आई गेस यूरो जापानीज येन भी कर सकते हो. Okay, but if you want to trade like some other currencies like New Zealand dollar versus euro or New Zealand dollar versus US dollar, अगर आपको ऐसे ऐसे ट्रेड लेने हैं, कैनेडियन डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर, ठीक है, तो इस तरह के ट्रेड जो है ना, आपको एक अलग फॉरेक्स अकाउंट खोलना पड़ेगा. ओके, तो देयर आर सर्टेन फॉरेक्स ब्रोकर्स, जैसे ऑक्स एफएम है, तो देयर आर मेनी मेनी अदर ब्रोकर्स जिनको आप यूज करके कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर मैं करेंसी ट्रेड करता हूं तो आई जनरली ट्रेड इन नॉर्मल करेंसीज ओनली. इंडियन करेंसी को ही ट्रेड करता हूं मोस्ट प्रॉब्ली, सॉरी मोस्ट जनरली इंडियन करेंसी को ट्रेड करता हूं, या कभी यूएसडी आईएनआर करा, कभी यूरो आईएनआर करा. ठीक है, सो इस तरह से फॉरेक्स करता हूं अगर इफ आई थिंक दैट ओके दिस इज अ गुड यू नो ऑप्शन फॉर मी, यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है मुझे, तो वरना ऐसे आई डोंट ट्रेड द होल. मैं वो बाकी सारे डॉलर पेयर्स को ट्रेड नहीं करता. Okay, I trade currency, but not all the currencies. Mostly USD INR या Euro INR, Euro USD, Japanese INR, इन सबको ही ट्रेड करता हूँ. ठीक है, चलो. So guys, ये चीज समझ में आ गई. अब हम लोग आते हैं चेक एंड मनी फ्लो. देखो करेंसी को, इसको एक बात यहाँ पे ध्यान रखना हमेशा. करेंसी बाइंग एंड सेलिंग in India for retailers is illegal. Currency buying and selling is illegal in India. You can but trade their derivatives. So अगर आप न्यूजीलैंड डॉलर या कैनेडियन डॉलर को ट्रेड करते हो, यूएसडी और कैनेडियन डॉलर को ट्रेड करते हो, then you are just trading their derivatives. That is not illegal. Okay, that's not illegal. आप जापानीज को आईएनआर से ट्रेड करते हो, ऑल दोस थिंग्स यू कैन डू, कोई ऐसा इलीगल नहीं है उसमें. ठीक है, जैसे यूरो यूएसडी को आप ट्रेड कर रहे हो, यूरो यूएसडी को, यूरो आईएनआर को ट्रेड कर रहे हो, सो ये सब आप यू आर जस्ट ट्रेडिंग द डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन दोस करेंसीज, नथिंग एल्स. ओके, नथिंग एल्स. ठीक है, ठीक है गाइस, क्लियर है अभी? चलो, let's move on to our check and money flow. So check and money flow में what you need to do is, हाँ, क्रिप्टो से तो बैन हट गया ना, क्रिप्टो से बैन हट गया. So now you can trade in crypto. Okay, so now listen to this very carefully. Check and money flow हम लोग कैसे यूज करते हैं? We just take the ratio of the volume, okay, and the money flow. That's our check and money flow. And you just need to simply go and type in check and money flow over here, and here you have this check and money flow. So now what you need to do is, in this check and money flow is, first of all, the first most important setting you need to do is, you have to draw two lines in this check and money flow. You have to draw two lines. Okay, one is 0.05 positive 0.05 and one is negative 0.05. Okay, so I'll just draw here two lines, a positive 0.05 and a negative 0.05.
1 second, sorry. Okay, so this over here is your positive 0.05. ओके, देख लो आप लोग, फिर से मैं लिख देता हूं, पॉजिटिव 0.05 एंड नेगेटिव 0.05। ये दो लाइंस लगानी है, पॉजिटिव ऊपर, नेगेटिव 0, तो ये बीच में 0 होता है इसके, ठीक है। सो 0 को मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं। Alright, so this is the 3-line setup of this Chaikin money flow. Okay, 3-line setup of this Chaikin money flow. Now, how do you trade this? How do you trade this? So यहाँ पे इसको देखो, Chaikin money flow is very simple. Okay, as I told you, this is the 0 line. Above the 0 line is your 0.05. Okay, and below the 0 is your minus 0.05. ठीक है? Now, below the 0 minus 0.05 is the bearish zone, or we can say bearish रहता है वहां पे. Above it is bullish, ऊपर bullish रहता है. Alright, this is simple. 0 की line. Let me just draw the line properly here also. Okay, so सबसे पहले जो आपको बाय सिग्नल मिलेगा वो आपको मिलता है जो आपको पहला मिलता है वो मिलता है जब स्टॉक नीचे से 0.05 के ऊपर क्रॉस करता है. रिमेंबर दिस, आपको एंट्री कब लेनी है? जब आपका स्टॉक 0.05 के ऊपर एंट्री करे तब आप बाय करोगे. Alright, number one, when it will cross above the 0 level. गाइस, स्क्रीन सही से आ रही है आप लोग को? वॉइस एंड स्क्रीन, एवरीबॉडी? ओके, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. सो यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसको. What is with the whiteboard over here? Okay, so the buying entry which you're gonna take is above the 0.05 level, that is here. That's, yeah, 0 को cross करें. This is your buying entry. Okay, you can buy at the opening of the next candle over here. Alright,
सो जैसे 0.5 के ऊपर जाएगा आप बाय कर सकते। अगेन यू कैन बाय अबव द 0.05 लेवल, जैसे यहाँ पे देखो क्रॉस कर चुका है एट दिस लेवल, इट हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड अबव द 0.05, कैन बाय। इसको जो है 0. जब ये 0.5 और 0 माइनस 0.5 it gets support, it gets consolidated in between this level। ये लेवल एक कंसोलिडेशन लेवल होता है इसके लिए, ओके ये लेवल एक कंसोलिडेशन लेवल हो सकता है। जैसे आप इधर देखो स्टॉक 0 पे गया फिर नीचे आ गया 0 टच करके, ओके ये बीच का लेवल कंसोलिडेशन होता है, इसलिए वी डू नॉट एंटर एट दिस लेवल। हम लोग एंटर करते हैं जब ये क्रॉस कर देता है, देखो जैसे यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, लुक एट दिस, it is crossing above the 0.05 level, then we have got a good buying entry। मैंने आपको कितनी बार दिखाया कि एक अच्छा बाय कॉल था, राइट? So check in money flow is above the 0.05 level, so we can buy the stock, okay we can simply buy the stock। तो जहां पे भी ये 0.05 के ऊपर जाएगा हम स्टॉक को बाय करेंगे, we are gonna buy the stock। और जब ये 0.05 के नीचे जाएगा, फॉर एग्जांपल below the 0.05 level, we are gonna sell, okay जैसे ही 0.05 को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, लाइक यहाँ पे हम स्टॉक को सेल करेंगे, ठीक है जैसे यहाँ पे नीचे ब्रेक करा इसने, यहाँ पे सेल करेंगे, ठीक है सो वी आर गोइंग टू सेल द स्टॉक, ओके तो 0.05 के नीचे वी आर गोना सेल द स्टॉक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0.05 के नीचे सेल द स्टॉक। अब बेरिश हरामी पैटर्न with a crossover below this negative level, good downside in Reliance in an RD chart, okay so इस तरह से आप जो है चेक इन मनी फ्लो को बाइंग सेलिंग करते हैं, crossover above and below the zero line, okay above and below the zero। am I clear with this guys? ये पहला बाय सेल सिग्नल क्लियर है, फर्स्ट बाय सेल सिग्नल क्लियर एवरीबॉडी? यस तो सोनम को क्लियर है, अनुरुद्ध को क्लियर है? ओके चलो सबको क्लियर है, चलो so next buying selling signal which we get is divergence and convergence, okay divergence and convergence, all right what does this means is that if our check in money flow is moving down, observe that when check in directive is positive from below, minus that time also stock, हाँ देखो इस तरह तो हमेशा आप देखोगे, कहीं भी आप मैकडी देखो चाहे कहीं पे भी देखो, अगर जीरो के नीचे भी है पर डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो अपसाइड आ सकता है, दिस इज पॉसिबल राइट। चाहे आप आरएसआई ले लो, आरएसआई भी 50 के नीचे है, अगर आरएसआई ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो अपसाइड आ सकता है, अपसाइड कैन कम राइट। सेम विद द डीपीओ भी अगर नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर जाता होता तो अपसाइड आता है। सो इस तरह से चेक इन मनी फ्लो में भी आएगा अपसाइड, ठीक है चेक इन मनी फ्लो में भी अपसाइड आएगा, but that is a risky thing to take the trade when it is below the 0.05 level। that's what we need to understand, that here when it is moving up, the chances for the stock is not as good as moving up from this particular level। क्योंकि अगर मान लो हमारा ये जो स्टॉक है, ये अगर मान लो इधर से आता, सपोज ये स्टॉक हमारा सपोज ये हमारा इधर से होता ये, तो यहां से नीचे का फॉल आने की भी चांस है, बिकॉज इट इज स्टिल इन द बेरिश जोन, दिस इज द बेरिश जोन राइट, बिलो जीरो लेवल बेरिश जोन, सो नीचे जाने के चांसेस आते हैं।
और ऊपर क्रॉस करके ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा। सो दिस थिंग इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सेकंड इज डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस। तो मैंने आप लोग को बताया कि अगर आपका क्या कहते हैं, इफ सपोज there is a if suppose the Chaikin money flow is moving like this, if the indicator is moving like this, okay, and the Chaikin money flow is moving like this, that this is a sell signal, okay. And then there's a convergence that if the stock is moving like this and Chaikin money flow is moving like this, we get a buy signal. Am I clear with these two signal, guys? Buy sell signal clear hai ye dono? Guys, clear with this buy sell signal? Everybody, yes or no? Clear with the buy sell signal of? Now just look at this, जो कि मैंने आपको बोला, it is below the zero level, ऐसे ऊपर जा रहा है, देखो यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। बट अगेन अब आप सोचो कि अच्छा ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप में भी यहाँ बाइंग पोजीशन ले लो, बट लुक व्हाट हैपेंड, स्टिल वेंट डाउन, नीचे चला गया, कितना अच्छा खासा स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाता। सो पॉसिबिलिटी इज ऑलवेज देयर कि यहाँ से हाँ ऊपर मूव करेगा एंड देन फाइट, बट यस देयर इज आल्सो दिस थिंग कि अगर बेयरिश जोन में है तो देयर इज मोर लाइकली चांस दैट कि स्टॉक हमारा नीचे की तरफ जाए। अब ना इधर देखो, यहाँ पे जब 0.5 के ऊपर क्रॉस किया तो ये ऊपर चलता चला गया, इवन दो इट शो सम फॉल लाइक दिस, बट ऊपर चलते चला गया। ऑलराइट, ऑलराइट, व्हेन कंपेयर टू दिस इज अ मोर स्ट्रांग सिग्नल, यस और नो? ऑलराइट, चलो, okay, so look at this, guys, this over here, this wall, okay. All right, guys. All right. So this is an abandoned baby formation, and we got a downside. All right. And look at this. Same time the stock was falling. What? This? What are you saying? Representing divergence. This is divergence, right? यही तो divergence है, मैंने यही तो बोला आपको. This is a divergence. और अगर इसको फुल परव्यू में देखो तो अभी ये ऊपर की तरफ ही चल रहा है, ऑलराइट, और अभी नीचे की आने लगा है. Look at this, a convergence, a very good convergence. Stock falling down, indicator moving up, a bullish candle, a gap of bullish candle, stock went down. So this is called convergence. Okay, this is called convergence. So ये convergence and divergence अच्छे होते हैं. You can trade them also. इसके जो convergence and divergence आप चाहो तो ट्रेड कर सकते हो, and they are also good signal, क्योंकि हम इसमें वॉल्यूम भी चेक कर रहे हैं तो फिर एक अच्छा सिग्नल आपको ये दे देता है. ठीक है. सो जैसे यहाँ पे देखो, सेल बिलो दिस लेवल, सेल बिलो दिस लेवल, सेल बिलो दिस लेवल, बाय अबव दिस लेवल. ठीक है, बाय 0.05 के ऊपर. सो दैट इज योर Chaikin money flow. Now how to give them points? I hope सबको समझ में आ गया होगा अब तक. तो सबसे पहले बाइंग साइड बात कर लेते हैं. तो बाइंग साइड सबसे पहले 0.05 के ऊपर जब क्रॉस करता है, we give it a buy signal, यानी कि 5 out of 5. Number 1. Number 2, a convergence. If there is a convergence, then also we give it a 5. Okay, all right. So ये हो गया 5 out of 5. There is a crossover above the 0.05 level, so 5 out of 5. Crossover below the sorry, there is a convergence, you get a 5 out of 5. Third over here is, that is 4 out of 5. And I know आप सब समझ गए होंगे आप 4 out of 5 कैसे देना है. When the stock is above the 0.05 level and the direction is, oh, what happened? And the direction is positive, यानी ऊपर की तरफ डायरेक्शन कर रहा है, this is a very good signal that the momentum is very bullish, plus
volume is also very bullish. So whenever there is a upward direction, you can expect good upside in the stock. So here we gave it a 4 out of 5. Yeah, positive direction, very good. All right, and then if suppose the stock is above the 0.05 level but direction is negative, so here you're gonna give it a 3 out of 5. So you're gonna give it a 3 out of 5. Okay, same with the sell side. अगर sell कर रहे हैं हम लोग तो so sell कर रहे हैं 5 out of 5 कैसे आएगा sell में 5 out of 5. When it crosses below the minus 0.05 level, we get a sell 5 out of 5. Again 5 out of 5. If there is a divergence, 5 out of 5. Oh, sorry, this is not, this is a convergence side to divergence. Okay, then you have 4 out of 5. That is if it's below the minus 0.05 level and the direction is negative, नीचे की तरफ direction है, so 4 out of 5. And then 3 out of 5 is when it is below the 0.05 level and the direction is upside. So this is gonna give it 3 out of 5. Okay, these are the, this is how you have to give them the points. Am I clear with this, guys? Am I clear? Tracking money flow, clear? It's a very good indicator. If you are using momentum based, if you're using volume based strategy, accumulation, distribution, tracking money flow are very important. Also, if you are looking for a good breakout and breakdown, कि आपको false breakout breakdown से बचना है, उसके लिए भी tracking money flow is a very good indicator. Okay, if you get a say breakout above a particular level, okay, for example a particular level, और यहाँ पे साथ साथ आपका tracking money flow भी, okay, tracking money flow भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन होता है tracking money flow का, या अगर ऊपर से रेजिस्टेंस मिल रहा है तो रेजिस्टेंस लेके अगर मान लो tracking money flow नीचे रहा तो दैट इज अ गुड सिग्नल. अगर ब्रेकआउट करते टाइम tracking money flow ऊपर क्रॉस करता है देन दैट इज अ गुड सिग्नल. ओके, सो फॉर एग्जांपल ओवर हियर दिस वाज this was a resistance at this particular level and it broke above here. तो अभी आप देखो tracking money flow ऑलमोस्ट जीरो के पास है, जीरो के ऊपर आप जा रहे हो. देखो यहाँ पे कंसोलिडेट कर लिया. See, I told you like it consolidates between the 0 point and 0.5 and 0 level. So consolidate करके फिर ऊपर की तरफ गया, and from you can see that okay the direction positive हुआ तो इसका अच्छा upside movement आया. So tracking money flow you can use in your momentum में एक आप money flow use करके एक tracking money flow in the volume use करके आप अच्छे price action को trade कर सकते हो. In the sense कि आप क्या कहते हैं, जैसे for example मैंने यहाँ पे जो चार्ट लेआउट लगा के रखे थे अपने, तो आप देखोगे इसमें आपको ये मिलेगा. Okay, this tracking money flow and money flow, I keep it for the price action. कि हाँ अगर प्राइस एक्शन मुझे मिल रहा है, कोई डबल बॉटम डबल टॉप मुझे कोई मिल रहा है, सो आई टेक कंफर्मेशन फ्रॉम एमएफआई एंड एमसीएमएफ. ओके, तो आप देखो ये सब मैंने ऑलरेडी लगा के रखा है, तो इसके बेसिस पे आई टेक द ट्रेड. अगर मुझे कोई अच्छा प्राइस एक्शन मिल रहा है, सो आई सी द वॉल्यूम, आई सी मनी फ्लो, आई सी द ट्रैकिंग मनी फ्लो, एंड इफ आई गेट अ सिग्नल फ्रॉम दैट देन आई टेक दैट पर्टिकुलर कॉल. वरना फॉल्स ब्रेकआउट की वजह से मैं उसको ट्रेड नहीं करता हूँ अगर आई डोंट गेट अ गुड कंफर्मेशन फ्रॉम these two indicators. So that's my way of using trading the price action. So I use MFI, I use CMF, tracking money flow. दोनों अच्छे पॉजिटिव सिग्नल देते हैं मुझको, तभी मैं प्राइस एक्शन को ट्रेड करता हूँ. whether be reversal, whether to continuation, then only I trade. Okay, so if I apply this here and okay. Okay, so just look at this. There's a breakout above this level. Just look at the tracking money flow. Cross above the 0 and 0.5 के बहुत ऊपर गया. ये 0.05 level. This is the 0.05 level, and it has crossed way above the 0.05 level with a when it has crossed above. And also look at the money flow. It is also very bullish, very positive momentum. Okay, so इस तरह से you can take the signal कि okay you want to trade that particular indicate that particular price action or breakout or breakdown or not. Okay, so I hope ये सब आप समझ गए होंगे. Okay, चलो.
तो ये हो गया हमारा चेक इन मनी फ्लो कंप्लीट, and it's a very good signal. You will definitely get good indications from this particular stock. Okay. और आप इसको भी देखो, जैसे यहाँ पे देखो स्टॉक हमारा नीचे चलते चले जा रहा है, मतलब इट्स फ्लैट, बट लुक एट द मनी फ्लो, check in money flow, it's moving up, so we can say that it's a convergence also. It's a convergence. We can expect good upside from this particular stock looking at the convergence. Okay, so convergence के टाइम ये नीचे रहे जीरो के तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है. Okay, so जैसे यहाँ पे देखो convergence है, it's below the zero level and we got good upside after this bullish pattern, right? So इस तरह से आप जो है इसके convergence and divergence को भी ट्रेड कर सकते हैं. Am I clear with this? अलग अलग चार्ट जो बनाते हो, मैंने आपको बताया, तो इस आपको मैंने सारे इंडिकेटर्स जब मैंने आपको सिखाए हैं, सो यू रिमेम्बर आई टॉट यू ट्रेंड. ट्रेंड में मैंने आपको क्या बताया था, ईएमए बताए थे, आपको 10-20 लगाना है, 50-200 यूज करना है. फिर मैंने आपको डीआई बताया था, मैंने ये और उसके एमएकडी बताया था, यही बताया था. एक इंडिकेटर बना लिया. नेक्स्ट इंडिकेटर आप जो बनाओगे वो मोमेंटम बेस्ड बनाओगे, जैसे आपने आरएसआई लगाया, एमएफआई लगाया, जो लास्ट सेशन में मैंने बताया था, रिमेम्बर सीसीआई. दिस इज अनदर इंडिकेटर. देन प्राइस एक्शन के लिए आई यूज से आइचिमोकू लगा लिया, एंड आइचिमोकू के साथ साथ मैंने एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन लगा लिया. देन अनदर जैसे मैंने प्राइस एक्शन को और देखना है, जैसे प्राइस एक्शन यानी रिवर्सल कंटिन्यूएशन देखना है, सो इसके साथ साथ में क्या कहते हैं सिंपल एमएफ और क्या कहते हैं एंड सीएमएफ लगा लेता हूँ. सो ये सब तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. ये तो ये प्राइस एक्शन वाला फंडा मैंने आज आपको बता दिया कि एमएफ और सीएमएफ लगा के यू कैन ट्रेड द प्राइस एक्शन. ठीक है, आईचिमोकू जब मैं बताऊंगा तो मैं आईचिमोकू उसके बाद समझाऊंगा आप. ठीक है, सो ये चीजें इस तरह से आप मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आपको नोट्स की जरूरत ही नहीं है. लेक्चर दोबारा से देखो, यू विल अंडरस्टैंड दिस, राइट? बस वही इंडिकेटर्स है, सेम इंडिकेटर्स है, देखो ना, वही सेम इंडिकेटर तुम्हें बताए हैं. ओके, ये अभी मैंने शायद चेंज कर दिया, वरना पहले ये यहाँ पे वही लगा हुआ था तुम्हारा ट्रेंड बेस्ड इंडिकेटर था. यहाँ तुम्हारा मोमेंटम बेस्ड इंडिकेटर है. जो आज मैंने तुम्हें सिखाया वो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है. जो तुम्हें कल बताऊंगा, नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा फ्राइडे में, वो यहाँ पे लगाऊंगा, दैट इज योर आईची. ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रेड करोगे. तो मैंने सब ऑलरेडी बता चुका हूँ ये सारी चीज. तो जिस तरह मैं ट्रेड करता हूँ, जो चीज मैंने दिखाता हूँ, वही आपको भी सिखा रहा हूँ, वही आपको भी दिखा रहा हूँ. ओके, so जैसे for example this, look at this this particular pattern, or you can say this particular flag. Just have a look at this. This is a flag pattern, right? This is a flag pattern. Okay. This is a rising flag pattern. Okay, just look at this breakout यहाँ पे किया, and look at the breakout जहाँ पे breakout लिया है. Look at the check in money flow, cross of the 0.05, ये 0.05 level ये है इसका, cross above the 0.05 level with a good upside movement. Look at this call. You can just simply buy this. This is a flag pattern. Look at this. This is a good rally. Flag, price falling flag, breakout, stock went up. That's how you find your trade opportunities, and that's how you trade your, you know, your breakouts and breakdowns using the check in flow, using the money flow. All right. Am I clear with this, guys? Check in money flow clear hai? Yeah, right. Okay, so now last thing for today, that is simple volume. अब इसके लिए मुझे कोई फंड, इसके कोई फंडा, इसके लिए कोई आपको फॉर्मूला वॉर्मूला तो है नहीं. हम सिंपल इंडिकेटर्स में जाते हैं और वॉल्यूम डालते हैं. ओके, वी पुट वॉल्यूम ओवर हियर. जस्ट लुक एट दिस, वी गॉट द वॉल्यूम. ऑलराइट, वी गॉट द वॉल्यूम, राइट? हमको यहाँ पे वॉल्यूम मिल गया. अब देखो, इसका ट्रेड करने का फंडा मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है. कुछ चीजें और इसके बारे में आपको बताऊंगा. पहली चीज मैंने आपको यही बताई थी इसके बारे में कि आप जब वॉल्यूम देखते हो, यू हैव टू सी दैट टू थिंग्स. ये हमको एक पहले तो ट्रेंड हमारा, गाइस मैंने जब आपको डाउ की थ्योरी बताई थी, आई टॉट यू द थर्ड थ्योरी ऑफ डाउ. डू यू गाइस रिमेंबर व्हाट आई टॉट यू ऑन द थर्ड थ्योरी? दैट ट्रेंड्स आर कंफर्म्ड बाय वॉल्यूम्स. यस और नो? ट्रेंड्स आर कंफर्म्ड बाय वॉल्यूम्स. Yes or no? Yes, I told you. That's what we see over here. कि अगर हमारा एक ट्रेंड है, if there's a trend available, so we need to see that it has to have good volumes, like good volumes. Let's look at the volumes. The good volumes.
this is an indication that this trend is good because we are getting good volumes. Okay, we are getting good volumes. All right, so trends are confirmed by volumes. जैसे यहाँ पे देखो, this trend, look at this trend, look at this trend. You've got good volumes over here. You've got good volumes over here. Okay, in this particular trend. So we can confirm that. Just look at this. This is a downtrend. ये ज़्यादा बेहतर downtrend है. Why? This is a much better downtrend than this up particular trend. Why? Because look at the volumes over here. Such high volumes in this downtrend. So whenever you are confirming a trend now, so you can simply look at that particular volume and you can understand. Okay, for example, look at this. This was a downtrend, and in this downtrend, the volumes were quite high as compared to this uptrend where volume were quite less. So this downtrend was more important downtrend than this particular one. So we can say that this might be a correction. Okay, to this downtrend. Why? Because here the volumes are quite high as compared to this particular level. So we can say this was a correction to this particular trend. Okay, so इस तरह से आप एनालाइज करते हो चीजों को. ऑलराइट, ट्रेंड को आप जो एनालाइज करोगे, यू विल सी अगर अच्छा वॉल्यूम में ट्रेडिंग हो रही है, लाइक हियर, जस्ट लुक एट द वॉल्यूम्स ओवर हियर, good volumes. Okay, so whenever you see good volumes in a trend, so you can assume that okay, this has a good trend and you can trade it accordingly. This is one thing which volumes tells us. Okay, just look at this. ये वाले ट्रेंड के मुकाबले, look at this, ये वाले ट्रेंड के मुकाबले, okay, look at this trend, big volumes. Now see what I'm talking about. Let's see. So ये भी एक ट्रेंड है, right? This is also a trend with low volume. This is high volume. So which one is actually a volume? This is A and this is B. Which one is actually a trend? Looking at the volume, just tell me. Which one is actually a trend? A or B? B is a trend, right? So how did you get to know that B is a trend? Because of great volumes at this particular trend. Okay, so it is rightly said that trends are confirmed through volumes. Look at this. This is an uptrend, right? Look at the volumes. Uptrend, good volumes, right? So trends are confirmed by volume. So whenever you are analyzing a trend and you are looking at a correction or something, तो आप देखोगे कि जहां पे ट्रेंड अवेलेबल होगा वो वॉल्यूम अच्छे होंगे, करेक्शन जहां होगा वहां वॉल्यूम कम होंगे. ऑलवेज रिमेंबर दिस. ओके, ट्रेंड में वॉल्यूम ज्यादा होते हैं, करेक्शन में वॉल्यूम्स आपको कम मिलेंगे. ऑलराइट, ओके, सो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखिएगा. दूसरी चीज, नाउ लुकिंग एट द ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स, हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं. तो फॉर एग्जांपल, सपोज इफ a certain support is broken out and if the current volume जिस पे ब्रेकआउट करा है, that volume is 2 times, almost 2 times or greater than 2 times of the previous volume, so we can say that okay, that's a good trading signal. Okay, ये false breakout नहीं होगा. Why? Because the candle is twice the previous candle. This is one signal. और जब भी ऐसा आपको सिग्नल मिलता है at the end of the day, okay, whenever you get such a signal at the end of the day, वहां पे आप क्या करते हो, वहां पे suppose you got this signal over here, this trend breakout, so you got a good, देखो 2 times है, greater than 2 times यहाँ पे मिलेगा आपको. So this is a good confirmation कि यहाँ से हम लोग buy कर सकते हैं. You can buy this stock here. Okay, looking at this, you know, breakout. Okay, this is one thing. All right, so जब भी 2 times almost आपके होगा, 2 times से ज़्यादा, so you can simply go for the trade. All right, at a breakout. Okay, this is a breakout. Volume is more than the previous volume. This is an ascending triangle. This is an ascending triangle. Right? Ascending triangle. Breakout from this triangle with a good volume, more than the previous volume, and the volume increasing. So we can trade this. Okay, even though it was not more than twice,
but yes, it was tradable. And now look at this breakout. More than thrice. This is greater than 3 times of this particular volume. All right, or you can say it's equal to 3 times volume. Actually, बस अंदाजे से आप कह सकते हैं, देखिए भाई 3 आ जाएंगे इसके अंदर. So this was a very good buying signal. Why? Because it was 3 times of the previous volume. So whenever the breakout or breakdown where it is crossing above the previous candle, whenever it is crossing up support resistance level or flag or triangle, if it is breaking and the volume is more than the previous volume, we can trade that. Okay, and we give it a 5 out of 5. If suppose I am gonna give this particular point, अगर मैं यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे अगर इसको एक यहाँ पे देता मैं, so यहाँ पे I would have given it a 5 out of 5. 5 out of 5. Okay, यहाँ पे मैं इसको 5 out of 5 देता. Why a 5 out of 5? Because यहाँ पे आपका जो volume है, that is more than the previous volume. Okay, so that's how you give a 5 out of 5. When at the closing point your volume is more than the previous volume, you give it a 5 out of 5. All right, one thing. Second thing is, if the volume is same, say volume मेरा इस तरह से same, या volume आपका बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, it's like all little bit up, okay, और थोड़ा सा. So at this particular point, I give it a 4 out of 5. Okay, I give it a 4 out of 5. For example, here, यहाँ volume बहुत ज्यादा difference नहीं है इस breakout पे. So अगर मैं मान लो day end पे stock check कर रहा हूँ, and I saw that okay, this is a breakout, and I just saw the volume over here. I just saw a volume over here. So यहाँ पे it is not twice the previous volume, so I'll simply give it a 4 out of 5. Why? Because it is up more than the previous volume or equal to the previous volume, but it is not more than the previous volume. Twice, at least twice more than the previous volume. So I'm going to give it a 4 out of 5. At this breakout, 3 times, so a very good buy signal, 5 out of 5. Okay. अब अगर next candle is lower than the previous candle, this 3 out of 5. Okay, so currently in Reliance, in this 1 hour time frame, this candle is smaller than the previous candle, so I will give this a 3 out of 5. How much? 3 out of 5. So right now अगर मैं journal में entry करता हूँ, so for Reliance I'm gonna give a 3 out of 5. Okay, for Reliance I'm gonna give a 3 out of 5. Okay, so that's your indication. अब एक और चीज में और आप यूज कर सकते हो इस वॉल्यूम इंडिकेशन में. You have to go to settings, you have to add volume MA. Okay, and इसको आप डार्क कर लो थोड़ा सा. So this is a moving average of the volume का moving average है. ठीक है, अगर कभी भी आप देखो कोई ब्रेकआउट होता है and it crosses above the moving average, that is also a good breakout. ये सब मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूं आपको फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए. पहला क्या आपको देखना है कि आपका कैंडल जो वॉल्यूम का बार बना है वो प्रीवियस वाले से 2 टाइम्स ज्यादा है. सेकंड, यू कैन सी दैट इट इज ग्रेटर देन द मूविंग एवरेज ऑफ दैट पर्टिकुलर मूविंग एवरेज से. दिस इज अ मूविंग एवरेज. कैसे लेके आना है इसको? यू सिंपली हैव टू गो टू सेटिंग्स ऑफ द वॉल्यूम. यहाँ पे वॉल्यूम एम है, यहाँ पे यू कैन चेंज. इनपुट इसका 20 होता है तो हम 20 रखेंगे. ओके, दैट मींस दैट 20 डेज का वॉल्यूम किस तरह से हमारा मूव कर रहा है. इफ द स्टॉक इज अबव द 20 वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 20 वॉल्यूम को क्रॉस कर दिया है, so we could have traded that. Okay, it's breakout, it has crossed the 20 volume, so I could have traded this particular trade. Okay, it's particular descending triangle. Why? Because breakout के time पे it is not just not just 2 times of the previous volume, but it also closed above the 20 MA of this volume. So this also gives us a confirmation for your trade. Okay, for your trade, जैसे यहाँ पे देखो cross of the 20 with a flying colors, so we can give it a very good buying signal at this particular level. So जहाँ पे भी 20 moving average के ऊपर क्रॉस करेगा at the breakout, you can expect a good upside in the stock. So अगर आपको फेक ब्रेकआउट देखने हैं, so कैसे देखोगे?
Number one, you will see the volume is twice the previous volume. Number two, you will see कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक है. नंबर थ्री, आप देखोगे कि आपका चेक इन मनी फ्लो 0.05 के ऊपर जा रहा है और इट इज पॉजिटिव. या आप देखोगे एंड ऑल्सो यू विल सी योर मनी फ्लो अबव 50 जा रहा है, अच्छे वॉल्यूम से ऊपर की तरफ जा रहा है, और कन्वर्जेंस है या जो भी डाइवर्जेंस है, वो सब देख के आप ट्रेड ले सकते हो. ओके, फॉर अ फॉल्स ब्रेकआउट. ठीक है, अगर आप वॉल्यूम का एवरेज नहीं भी देखते हो, एटलीस्ट ये जरूरी है. ओके, दिस इज वेरी गुड सिग्नल. जहां पे 2 टाइम्स ज्यादा वॉल्यूम होता है प्रीवियस वॉल्यूम से, यू कैन ट्रेड दैट. एम आई क्लियर विद द वॉल्यूम गाइस? वॉल्यूम इंडिकेटर सबको क्लियर हो गया? 3 तरह के वॉल्यूम इंडिकेटर है एंड यू कैन जस्ट अप्लाई देम along with all the ये पूरे के पूरे में आप अप्लाई कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, आई विल जस्ट गो टू द वॉल्यूम इंडिकेटर्स. फर्स्ट आई एम गोइंग टू पुट my strategy, then I'm going to put CMF. This is a volume based trading. CMF, ये 2 मैंने डाल दिया and I have my volumes above this particular level. मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ. This also I'll just darken it up, and here you can see इसको थोड़ा सा से 2 levels बनाने हैं इसमें. minus 0.05 is this 5, and this level is your minus 0.5, and over here. So now when are you have to see are you getting a buy signal from check in money flow? Then you have to take the confirmation from MF from say accumulated distribution and you can trade. यहाँ से देख लो moving average के ऊपर जा रहा है, या it is more than 2 times of previous volume, 3 of the previous volume, and you can take the trade. Okay, आप ट्रेड ले सकते हो. So this is a volume based strategy जहाँ पे आप सिर्फ वॉल्यूम्स को देखते हो कि वॉल्यूम्स कैसा परफॉर्म करे. फॉर एग्जांपल, this is a Tata Motors. So Tata Motors has fallen down below the say 50 का level क्रॉस कर दिया है. So we got a sell signal in Tata Motors right now. Why? It has crossed below the 20 below the check in money flow. Okay, check in money flow के नीचे जा चुका है हमारा Tata Motors. Okay, so यहाँ पे आप देखो तो हमारा जो हमारा accumulation distribution है वो थोड़ा सा न्यूट्रल है, थोड़ा इस तरफ से. अगर ये नीचे की तरफ हो जाता, this would have been a very good call. अब अगर कल के दिन टाटा मोटर्स ब्रेक करता है इसके नीचे, मंडे के दिन, with check in money flow moving downward, check in money flow moving downward and accumulation distribution pointing downwards with a volume more than the previous volume or above the moving average, you can sell Tata Motors. So that's your sell signal on Tata Motors when it crosses below the 0.05 level, which it has. Now accumulated distribution below this previous, ये देखो ये आपका एक previous support level भी है. This is the previous support level जहाँ पे बिल्कुल खड़ा हुआ है. देखो आप, ये previous support level है. So if it breaks below this support level, you will again get an entry and you will sell the stock. तो ये एक support है इसको. So ये भी support टूटेगा, ये support टूटेगा. Check in money flow already in this, and you can simply take the trade. And look at the divergence. ये देखो, ये stock ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है. So there was a clear-cut divergence in the stock, and we can see that ये हमारा stock नीचे. जहाँ यहाँ पे divergence अच्छा नहीं बताया, यहाँ पे लेकिन यहाँ divergence बताया इसने. Look at this. This is a divergence. And from here this stock went down. So आपको इस तरह से इनका यूज करना है and you can simply trade them. Okay. For example, this is a divergence. Look at this. यहाँ पे इसने divergence दिया है. This is a flat level. ये नीचे जा रहा है, flat है. So this has given you a sell signal. You can simply sell the stock from this particular level. So इस तरह से आप जो है इसका volume indicators का यूज करोगे for your trading the volume indicators. हाँ, आप CMF को भी यूज कर सकते हो, बट मैंने कहा ना accumulation distribution के in divergence and convergence are very good, extremely good. Okay, so you can trade. What if the first candle is red and second candle is twice the previous candle? How it makes a gap up then? Can I buy the stock quickly? No, देखो क्या अगर मान लो इस तरह का मूवमेंट आता है, एक रेड कैंडल है, फिर एक गैप अप होता है और एक बड़ा कैंडल बनता है, बुलिश कैंडल बनता है, मे बी you have to wait for next candle to. मैंने कहा ना गैप अप्स को ट्रेड करना है तो you have to trade when it crosses above the gap up level, वरना गैप फिलिंग आ सकती है, जो कि आज जैसे बजाज कंज्यूमर में आई है गैप फिलिंग. ओके, गैप फिलिंग आ सकती है नहीं तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना. डाउ फॉल कर गया है तो अब देखना पड़ेगा, मे बी कोई न्यूज और समथिंग आई होगी डाउ में. ओके, सो डाउ आज का शुरू हुआ है हमारा यहाँ पे.
ओके 26 जून डाउ आज नीचे है 2% नीचे है आज। ओके गैप डाउन भी खुला है डाउ। आज डाउ गैप डाउन खुला है यहाँ पे। ओके Amazon took the support and went up। देखा ये सपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, राइट। एप्पल भी नीचे आया, took the support and went up। लेकिन हाँ एप्पल ने काफी अच्छा डाउन दिया था ब्रेकआउट के बाद, यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, राइट। हम लोग ने यहाँ ब्रेकआउट देखा था उसको। This is a breakout from here it went to this particular level, so that's what the good $5 का आपको प्रॉफिट यहाँ एप्पल में हो जाता in 15-30 minutes। So anyway, so आप ट्रेड कर लेना है इसको, कभी भी आपको अगर ट्रेड करना हो so you can simply trade that also। okay, रात में प्रैक्टिस करनी हो तो आप इस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, क्लियर है सब कुछ? वेदिका हाँ क्लास ओवर हो गई, डोंट वरी। yeah we have to we have to wait for the candle to move above this level and we can take the risk and trade। all right, okay, हम कैंडल का ये ऊपर जाने का वेट कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट कैंडल, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल जो फॉर्म होगी ना, अगर वो रेड कैंडल फॉर्म होती है तो वो नीचे गिरते जाएगा स्टॉक। बट इफ अ ग्रीन कैंडल इज फॉर्म, ओके इनिशियली ग्रीन कैंडल बना और ऊपर जाके इसको ब्रेक कर दिया, सो यू कैन टेक द एंट्री ओके इन अ गैप अप। ऑलराइट चलो गाइस, तो फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। अविनाश आज इसको रहने देते हैं, हाइकिनाशी में आपको नेक्स्ट में थोड़ा सा कर दूंगा, ठीक है। आज अभी इसको यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। और बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में आईचीमो को शुरू करूंगा तो थोड़ा बहुत आपको हाइकिनाशी बता दूंगा, ठीक है। हाँ पीएल में देख लूंगा अनिरुद्ध, देखो अभी मैं देख लूंगा। हाँ मैं समझ रहा हूँ अनिरुद्ध, मैं देख लूंगा, अभी फ्री होऊंगा मैं तो देख लूंगा, क्योंकि यार कल भी मेरी क्लास है सुबह और दोपहर में भी क्लास है, परसों भी क्लास है सुबह और दोपहर में। सो आई विल सी इफ आई गेट टाइम, तो मैं आपको देख के बता दूंगा, ठीक है। चलो ओके गाइस, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हम पढ़ेंगे हमारे लाइव सेशन में। लाइव सेशन होगा हमारा मोस्ट प्रोबेबली सेकंड वीक ऑफ जुलाई, उसमें हम लोग फ्यूचर्स ऑप्शन पढ़ेंगे, ठीक है। ऑलराइट गाइस, जस्ट डायल। ओके देखो जस्ट डायल में यहाँ पे देखो, बेरिश हरामी। एनीवे जस्ट डायल थोड़ा सा इट हैज टेकन दिस पर्टिकुलर सपोर्ट, ये सपोर्ट लिया हुआ है इसने, पॉजिटिव है, सो वी कैन एक्सपेक्ट इट। लेकिन लुकिंग एट दिस चेकिंग मनी फ्लो व्हिच इज ऑलरेडी क्रॉस बिलो दिस लेवल, यहाँ पे भी एक सपोर्ट ले सकता है चेकिंग मनी फ्लो का 0.20 लेवल पे एंड इट माइट मूव अप। सो लेट्स सी, यहाँ पे एक वीक कैंडल बन रहा है which is telling us that this upside movement can be closed and the stock might actually come down in the next day, forming a doji evening star। So we have to wait for the next candle। अगर आपने buy कर रखा है so you can hold it till this particular level, ये एक अच्छा support है stock को। Okay, if you have bought this particular stock ना just then, you can hold it at this particular level। If you want to buy तो you can buy at this current level also, because 700 का anyway you have your ऑप्शन है आपके पास। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं बायबैक के लिए डाल रहे हो तो ये लेवल ज्यादा बेहतर रहते हैं बायबैक के लिए। 350 360 के लेवल वुड हैव बीन अ गुड लेवल टू गो फॉर बायबैक। स्टिल यू आर गेटिंग लाइक 400 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको हो ही रहा है एनीवे बायबैक बेस में। सो अगर आप होल्ड कर रहे हो देन कीप ऑन होल्डिंग, वरना अगर आपने होल्ड नहीं करा तो वेट, अगर नीचे आता है इस पर्टिकुलर लेवल से यहाँ से आप बाय कर, ठीक है, जो कि थोड़ा से गिरने का सार लग भी रहे हैं। लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर ना, ये देखो
ये पर्टिकुलर चीज भी हमको बता रही। सो यस, थोड़ा सा नीचे फॉल आ सकता है इन द कमिंग डे, संडे के दिन, मंडे के दिन, ठीक है। सो जस्ट कीप अ ट्रैक ऑन इट। ओमकार, सॉरी आई डिडंट गेट यू। नेक्स्ट सेशन नहीं करण, कल नहीं है नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन इज ऑन नेक्स्ट फ्राइडे सेम टाइमिंग, ओके। वो लास्ट सेशन हमारा, लास्ट थ्योरी सेशन है, दैट इज नेक्स्ट फ्राइडे इज, आई टेल यू, नेक्स्ट फ्राइडे इज योर 3rd, और हमारा जो लाइव सेशन होगा दैट विल बी समवेयर ऑन 7th को हो जाएगा हमारा लाइव सेशन मोस्ट प्रोबेबली, या हमारा नहीं, यू हैव टू हैव 1 वीक फॉर दैट लाइव सेशन प्रिपेयर करने के लिए। सो आपका जो सेशन होगा दैट विल बी ऑन जुलाई का 2nd ट्यूसडे, दैट इज 14th, 14 तारीख को आपका हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो आपका बैच शुरू हुआ है अराउंड 14th मई से शुरू हुआ है, 14th जून एंड 14th जुलाई। सो या 2 months में हमारा ऑलमोस्ट कोर्स कंप्लीट हो गया। एज आई टोल्ड यू 2 महीने में हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, सो बॉट 25 for 73, ओके, 373 बाय किया है ना आपने, हाँ ठीक है। सो कीप ऑन होल्डिंग, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बाय बैक ना, तो यू कैन होल्ड इट अगर बाय बैक लिए देख रहे हो, वरना यहाँ पे एक फॉल आ सकता है, इट माइट फॉल टू 360 लेवल, ओके। तो 363 के लेवल तक फॉल आ सकता है, and from this level the stock might move up again, so you can keep on holding up till this level, या थोड़ा सा और रिस्क लेना है, क्योंकि ज्यादा लॉस नहीं है, 25 ही क्वांटिटी है, तो 10-20 रुपए का, 50 रुपए का भी लॉस होगा तो 750 यहाँ इन ये लेवल्स आप होल्ड करके रखना, ओके, as you are taking the delivery, right? So these levels have to be seen. So first level जो होगा वो होगा हमारा 300 and I'll just tell you the exact 354 का first support, 354, and then the second one is 325, 325. So ये दो levels देख के रखना, alright? So इनके नीचे exit would be better idea, because इसके नीचे फिर free fall आपका गिरेगा around 200, 270, 280 के अंदर आ सकता है. So keep on holding till these levels, okay? Okay, alright. Omax, आपने बाय करा हुआ है क्या? ऐसे इलिक्विड स्टॉक्स पे कोई टेक्निकल वेक्निकल चलता नहीं है, एनीवे फिर भी सब, फिर भी आप देख लो उसमें, खैर वॉल्यूम तो अच्छा हमें मिल रहा है देखने को. दिस इज अ माउंटेन हिल व्हिच इट फॉर्म, काफी बड़ा अपसाइड दिया है इसने इस मंथ को, लास्ट मंथ. डेली वॉल्यूम कितना है इसमें? डेली वॉल्यूम बहुत कम है, 2000-3000 शेयर्स, 2 लाख शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं बस. कितने लेवल पे पाएंगे अदानी ग्रीन बेस्ट टू बाय? मैं बताऊंगा हर्षल, दैट आई विल टेल यू. मैंने आपको वीडियो भेजा तो हुआ है 6 स्टेप के लिए कैसे करना है आपको, रात में मैं फिर से बता दूंगा, लाइव बता दूंगा, फिक्र मत. 200 पे बाय है ओमेक्स का, 200 पे. तो अभी तो देखो सर्किट पे सर्किट मार रहा है अभी. आई कैन नॉट से एनीथिंग इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक. इसका या तो ये यहाँ पे टेक्निकल्स भी चलेंगे नहीं, देखो सर्किट मार रहा है. थोड़ा सा इसकी न्यूज बेस देखनी पड़ेगी मुझे, कुछ पॉजिटिव या कुछ है ऐसा क्या? लुकिंग एट चेक इन मनी फ्लो, देखो हमारा एक्यूमुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ऊपर जा रहा है, चेक इन मनी फ्लो भी ऊपर की तरफ ही है. सो वी कैन एक्सपेक्ट मोर अपसाइड. इट इज अबव द 0.05 लेवल ना, तो वी कैन एक्सपेक्ट मोर अपसाइड इन दिस स्टॉक लुकिंग एट द चेक इन मनी फ्लो. सो कीप ऑन होल्डिंग. अभी एनीवे एग्जिट कर भी नहीं पाओगे इसको, सो जस्ट कीप ऑन होल्डिंग दिस स्टॉक, ओके. अच्छा, मे भी ऊपर फिर से सर्किट मार दे जाके. लॉन्ग टर्म टारगेट 600, हाँ रख सकते हो. अब इसमें मैं एक बहुत क्लियर कट आपको आंसर नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज इस पे आई हैव टू सी, थोड़ा सा स्टॉक का फंडामेंटल देखना पड़ेगा. आई बेसिकली जस्ट लुक, मैं ज्यादा फोकस लिक्विड स्टॉक्स पे करता हूँ. लिक्विड स्टॉक चाहे जितना आप पोटेंशियल अपसाइड,
मैं उन पे फोकस नहीं करता हूँ। सो प्लस बेसिकली मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ, तो लाइक इंटरडे का ट्रेड करता हूँ, ज्यादातर इंटरडे स्विंग ट्रेड करता हूँ, नॉट ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हूँ मैं। अच्छा, ग्लेनमार्क वाले दिन आप लोग को, ग्लेनमार्क का मैंने लास्ट सेशन आपको बताया था राइट? किसी ने पैसा बनाया था ग्लेनमार्क में? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ओके। सो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक आपको पैटर्न फॉर्म किया है। The name of the pattern is head and shoulder, almost in neckline के आसपास ही है, neckline breakout दे चुका है। Keep on holding till this particular level, इसके नीचे जाएगा तो गिर सकता है स्टॉक। If the check in money falls below this level 0.05, we can expect a downside in this particular level। और अगर आप देखो तो this is a mountain hill also, अगर आप इसको वो नहीं मान रहे हो, head and shoulder नहीं मान रहे हो, this can be a mountain hill, so it might see a reversal। Just look at this, same thing, fall आया था इसके नीचे, so we can expect more fall below this particular level। Also there is a particular divergence also, divergence नहीं है। So just look at this, keep on holding till this level 567 के नीचे एक अच्छा फॉल आ सकता है to this 525 500 levels तक भी फॉल कर सकता है नीचे। Okay, so keep on holding for now and you can hold it till 567। यार अगर थोड़ा सा और कर सको तो होल्ड कर लो इसको इस पर्टिकुलर लेवल तक, दैट इज 562। इट्स अ वेरी स्ट्रांग सपोर्ट, ओके, बिकॉज़ प्रीवियस यहाँ पे सर्किट बीट करा है, सो दिस इज अ वेरी स्ट्रांग सपोर्ट। 562 तक आप होल्ड करो इसको। 562 के नीचे फिर ये फ्री फॉल करेगा अराउंड आपका 500 के लेवल्स तक आ सकता है। ओके, चलो गाइस, फिर आज के लिए हम खत्म करते हैं। Adani Green is a good stock. You can keep on holding it if you have Adani Green. Okay. Adani Green ठीक ठाक stock. So you can keep on holding Adani Green। अभी तो खैर लोअर सर्किट मार रहा है, लेकिन अगर मिल जाती है एंट्री आपको तो लेके रख सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। ओके, बहुत ज्यादा फिर भी मैं इस पे नहीं बोलूंगा। एज आई टोल्ड यू, इलिक्विड स्टॉक्स पे मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, मैं बिल्कुल भी इलिक्विड स्टॉक्स पसंद नहीं करता। इलिक्विडी अगर मुझे खेलना हो, मैं गोल्ड में ज्यादा इन्वेस्ट कर दूं फिर भी ठीक रहता है, सेफ इन्वेस्टमेंट है। ऐसे सब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से बेहतर है। ओके, सो थोड़ा सा ये नीचे की तरफ आया है, लेट्स सी अपर सर्किट में फिर हिट करेगा कि नहीं करेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा, इसका पढ़ना पड़ेगा स्टॉक के बारे में थोड़ा सा। ऑलराइट गाइस, यू कैन बाय ऐड मोर। अगर नीचे गिरता है, काफी अच्छा अपसाइड दिया हुआ है इसने लॉन्ग टर्म, काफी बड़ा अपसाइड है इसके अंदर। सो अगर कंटिन्यू रखा इसने ये मोमेंटम, तो वी कैन एक्सपेक्ट मोर अपसाइड। नहीं, फ्री फॉल नहीं होगा, इतना इतना ज्यादा फ्रीली नहीं गिरेगा ये, डोंट वरी अबाउट दैट। 200 पे लिए 10, चलो बहुत बढ़िया, गुड। ऑलराइट, ओके गाइस, चलो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। इसके लेवल सेट करके रखना वैसे तुम, ठीक है। इसके कुछ लेवल्स देख लेना जिन लेवल्स तक ये फ्री फॉल ना दे। फॉर एग्जांपल दिस लेवल 346, ये लेवल तक मेरे ख्याल में होल्ड करना बेहतर है। इसके नीचे एग्जिट ले सकते हो तुम, इसके नीचे फिर ये काफी पीक हो जाएगा। ऑलराइट, सो ओके, ट्राई, या तो ऐड कर लेना, और ज्यादा ऐड कर लेना तो एवरेज आउट हो जाएगा तुम्हारा प्राइस में, ठीक है। तो यू कैन ऐड मोर इन दिस पर्टिकुलर, लोअर प्राइस ऊपर जाएगा तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलो, ऑलराइट गाइस, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर गाइस, सेम टाइम फ्राइडे 5 to 9 PM। ओके, चलो, बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। और प्लीज प्रैक्टिस करो अच्छे से, हमारा लाइव लेक्चर भी होने वाला है अगले सेशन में, आपको बहुत मजा आने वाला है, इसलिए डू नॉट लीव द लेक्चर। आइचिमोकू से मस्त स्ट्रैटेजी कोई भी नहीं होगी, एंड यू विल लव दैट स्ट्रैटेजी। ओके, okay, good night Shivam, good night everybody, see you in the next lecture।